आयोजित बजट परिचर्चा पर मैं राजेंद्र मालपानी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में श्री आशीष कुमार जी चौहान, एमडी एंड सीईओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं आईवीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी अग्रवाल सम्मानीय अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक हैं आईवीएफ मुंबई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीए श्री अशोक जी अजमेरा। आज के कार्यक्रम में बजट विश्लेषण के लिए वक्ता रूप में हमसे जुड़ रहे हैं सीए श्री रामदेव जी अग्रवाल, सीए श्री एसपी तुलसियान जी, सीए श्री विमल जी पूनमिया। आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए इस प्रार्थना के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। धियो यो न प्रचोदयात्। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे आईवीएफ मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष श्री डीसी गुप्ता जी को, वो अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हेलो, आर यू हियरिंग मी? या सबसे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि ये कार्यक्रम HVC न्यूज 18 के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, श्री आशीष चौहान जी, एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे यशस्वी वक्ता श्री रामदेव जी अग्रवाल, श्री एसपी तुलसियान जी, श्री विमल पुनिया जी, देश के सभी प्रदेशों के आईवीएफ अध्यक्ष गण, राकेश जी मेहता, कांतिलाल जी मेहता एवं इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी सज्जनों एवं देवियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा बजट एनालिसिस का यह कार्यक्रम 2006 से लगातार 17वीं बार हो रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने में सबसे बड़ी भूमिका श्री राकेश जी मेहता ने निभाई है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे सभी स्पीकर्स का बहुत आभारी हूं जो अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना समय निकालते हैं। मैं आईवीएफ के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री अशोक अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी पूरी टीम, विशेषकर श्री अशोक अजमेरा जी व श्री राजेंद्र मालपानी जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं हृदय से यहाँ उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत सत्कार करता हूं। अब मैं श्री अशोक अग्रवाल जी से विनती करूंगा कि वे हमें संबोधन करें। थैंक यू। अशोक अग्रवाल जी। क्या हुआ? सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आईवीएफ इंटरनेशनल वैश फेडरेशन के हमारे मुंबई चैप्टर के द्वारा यूनियन बजट 2022-23 के ऊपर हमारे गणमान्य सीए, देश के जाने माने सीए के द्वारा आज इस विषय पे चर्चा होगी, इम्पैक्ट ऑफ दिस बजट ऑन द कम्युनिटी, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमन मैन। मैं इंटरनेशनल वैश फेडरेशन की ओर से श्री आशीष कुमार चौहान जी, एमडी एंड सीईओ बीएससी का आभार व्यक्त करता हूं कि in spite of busy schedule he is here with us to address the gathering. CA Ramdev Agrawal ji, CA SP Tulsiyan ji and CA Vimal Punia ji, sir, special thanks to you that you have been continuously addressing our gathering on this budget eve, and
making an in-depth analysis of impact of this budget and integrities and analysis how this is going to impact the life of common man, trade and industry. Dear fellow friends, I appreciate the budget being presented today by Honorable Finance Minister under the leadership of our Prime Minister Modi ji, with a vision that the country has to go for a development. कोई भी फोकट की चीज उन्होंने नहीं बांटी, जो कि उम्मीद थी कि इसमें 5 प्रदेशों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत कुछ इसमें बजट में बांटा जाएगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस का ध्यान नहीं रखते हुए देश हित के अंदर जो होना चाहिए था उसी चीज को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके हमारे जो स्पेशलिस्ट आए हैं इसके सीएस हैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके मैं भी आतुर सुनने के लिए implications of this budget. I am sure that this will be a very fruitful discussions and deliberations by all the dignitaries. Once again, I thank you all and especially the Mumbai chapter of IVF for organizing this event every year on the budget eve. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे आज के संयोजक और संचालक श्री अशोक जी अजमेरा से अनुरोध करूंगा कि अब वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राजेंद्र जी and DC Gupta साहब for giving me this responsibility. I would like to introduce to you a very tall man, our guest of honor today, who does not know him, Mr. Ashish Chauhan, the MD and CEO of Bombay Stock Exchange, one of the largest stock exchange of the world. Ashish ji is a technocrat from IIT and IIM. Currently works as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange, BSE, with market capitalization of listed companies close to over $3 trillion. At BSE since 2009, Ashish ji has helped BSE become a fastest stock exchange in the world with 6 microseconds response time. Completed its IPO, revived the revenue, introduced the mobile stock trading in India, diversified in the areas such as currency, commodity, equity derivatives, SME, startup. In fact, I am also fortunate to be one of the working committee member of the SME group, which was formed by him about 6 years back when the SME platform started by Bombay Stock Exchange. Startup, mutual fund distribution, bond distribution, insurance distribution, agri stock market. In mobile, there are a lot of disruption and many people are trying to contact me. Power trading and international exchanges at the GIFT City, etc. Ashish ji acted as the CEO of, you will all be surprised, as the IPL cricket team of Mumbai Indians, after his stint in NSE. And in his formative years, he worked as the president and CIO of Reliance Group from the year 2000 to 2009 in the field of IT, e-commerce, public relations, media, telecom, sports, organized retail, IPO, petrochemicals, refining, oil and gas, etc. Ashish ji was actually an instrumental to start even national stock exchange, first online stock exchange along with a team of 5 people which were given by IDBI to form this exchange, and he did wonders there. In fact, if I read the whole biodata, it will take a lot of time, but because of the paucity of time, I would only like to add that he is on the committees of the various organizations, various institutions of the government of India, SEBI, stock exchanges, finance ministry, not only national, even in the international committees. Also, as the vice chancellor, or what do you call it, as a director of some of the foreign institutes, foreign educational institutes also, and has been a recipient of several awards and recognitions. If I list all them, it will take more than an hour for me. But with this short and brief introduction, I would like to request before you all, my very good friend, in fact, my guide, friend, philosopher, BSE MD and CEO, Shri Ashish Chauhan. And I would request him to say few words of blessings to all of us. धन्यवाद अशोक जी अजमेरा, अशोक जी अग्रवाल,
डीसी गुप्ता जी, मालपानी जी, मेरे बंधु मित्र रामदेव जी अग्रवाल, तुलसियन जी, पूनमिया जी, हम हर साल साथ में मिलकर ये जो बजट के शाम को ये कार्यक्रम, मुझे लग रहा है 2009 से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ये कार्यक्रम में, एक भी साल मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे आप बुलाते हो, और मुझे मालूम है कि जो आप सुनना चाहते हो रामदेव जी से या तुलसियन जी से या पूनमिया जी से सुनना चाहते हो, जैसे अशोक अग्रवाल जी ने भी कहा कि भाई हम तो एक तरह से निमित्त है। तो दो तीन चीज कहूंगा जो स्वाभाविक एनालिसिस में नहीं आएगी, कि एक तो ये चीज है कि कौन सी पूर्व भूमिका में ये बजट बनाया गया है, कि कोविड काल के दौरान 2 कोविड के साल अभूतपूर्व चीज बनी है। 100 साल में कभी ऐसी अनहोनी नहीं घटी है विश्व में जो पिछले 2 साल में हुई है। उसके बावजूद ये जो भारतवर्ष चलता रहा, अच्छी तरह से चलता रहा, तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और सिर्फ केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने, शहरों की सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लग रहा है कि हम उस पूर्व भूमिका में ये बजट को देखना चाहिए कि उनके पास कितने कंस्ट्रेंट्स थे। बहुत कुछ कर सकते थे। अफवाहें भी उड़ी थी कि वेल्थ टैक्स आएगा या टैक्स बढ़ाया जाएगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अपना जो कॉस्ट था उन्होंने कंट्रोल किया है, जहां खर्चा करना चाहिए वहीं पे किया हुआ है, और जहां खर्चा नहीं करना चाहिए था वहां पे नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा लंदन में 80% सैलरी जो नौकरी नहीं जा रहे थे उनको भी दी गई। तो यूके की जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, उसका जो डेट है वो अब इंडिया से भी ज्यादा हो गया एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। पहले अपने से आधा भी नहीं था, क्योंकि वो फ्री में ही सबको बांटते गए। तो भारत सरकार ने जहां बांटना चाहिए था वहां बांटा, जहां नहीं बांटना चाहिए था वहां नहीं बांटा। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात करी है। दूसरा है कि अभी भी कोविड हटा नहीं है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 और वेव्स आए और उस समय गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट पहले से बोलती आई हुई है कि भी हम कुछ ना कुछ अपने पास रख रहे हैं, जिससे कोई और दुर्घटना होती है और कोई आपत्ति आती है तो हम उसमें और खर्चा कर सके। तो ये जो पूरे अपने कार्ड अभी बिछा नहीं रहे, थोड़े से कार्ड अपनी जेब में डाले हुए हैं। तो मुझे लग रहा है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सरकार है एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड है, जो चीज हाथ में लेती है वो करके देती है। तो वो भी एक चीज आपने, जो पहले व्यय होता था पैसों का, सब्सिडी वगैरह का, वो कम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह से। जो रोड्स बनने चाहिए थे वो बन जाते हैं। कई चीजें ऐसी है जो हम उसको सराहते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये वित्त मंत्री का ये दूसरा बजट है कोविड के काल में। कोई भी वित्त मंत्री ने एक बजट भी कोविड काल में नहीं दिया था, ऐसी कोई आपदा में, कुदरती आपदा में। जो ये मंत्री ने 2 दिए और दोनों में मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी टीम ने अच्छा काम किया। तो हमें उसको एक तरह से अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। जो ग्रोथ ओरिएंटेशन उन्होंने किया है, 7.5 लाख करोड़ कोविड काल में भी उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक तरह से एलोकेट किया है, जिससे पंप प्राइमिंग होगा। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है उसके एवज में गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक चीज आप रामदेव जी से सुनेंगे, बाकी जो स्पीकर है उनसे भी सुनेंगे। डिजिटल मेरे हिसाब से 4 पहिए है कि एक तो ग्रोथ ओरिएंटेशन है, दूसरा है डिजिटल, फाइबर ऑप्टिक टू एवरी हाउस, ई यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, और ऐसी कई चीजें जो डिजिटल पे ध्यान दिया हुआ है। तीसरा पहिया है ग्रीन का, कि यहाँ पर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, उसके ऊपर भी ये सरकार ने ध्यान दिया हुआ है। और चौथा है कि कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत सारी अफवाहें थी, तरह तरह के टैक्स बढ़ने वाले थे, कुछ नहीं बढ़ा। तो वो भी एक शुक्र है कि भाई टैक्स नहीं बढ़ा है। उसके अंदर अंदर ये बजट पेश किया गया, तो उसके लिए मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, और नए साल सबके लिए अच्छा बीते, अच्छा कमाओ, अच्छा टैक्स भरो, वो भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी for your inspirational words, and you have rightly said you are a man of digital. You have transformed the entire stock exchange functioning, and this budget has also given a lot of thrust to digitalization. With this, we are very happy that our first speaker, the doyen of capital market, Ramdevji Agarwal, has joined us. Ramdevji Agarwal, who does not know him, again,
You know, we have such stalwarts today in this meeting that, in fact, you don't need to introduce them. But for the sake of Ramdevji's, I will just make a small formal introduction of Ramdevji Agrawal. Ramdevji Agrawal is the chairman of the Motilal Oswal Financial Services Limited and the driving force behind the company's approach to the investing. MOFCL is a well-known diversified financial services firm offering a range of products and services in securities, commodities, investment banking, asset management, and venture capital. As chairman of the Motilal Oswal Asset Management, the fastest growing asset management company in India, Mr. Agrawal has created the QGLP, Quality, Growth, Longevity, and Favorable Price investment process, and it's a buy right, sit type investing philosophy. He is also the driving force behind the MOFSL Group's highly awarded research. He has been authoring the annual Motilal Oswal Wealth Creation Study since its inception in 1996. In fact, every one of us, we look forward to this study, you know, such a vast study with his own experience of so many years. We all people in the capital market look for this study. Mr. Agrawal is an associate of the Institute of Chartered Accountants of India and a member of the National Committee on Capital Markets of the Confederation of Indian Industries. He has also featured on the Wizards of the Dalal listed on CNBC TV 18, and he wrote a lot of books, you know, the corporate books like Numbers Game, and has been awarded with numerous number of awards. In fact, I think about a decade or 2 decades back, for 3 consecutive years, he was awarded the highest paid individual income taxpayer. And with that, I would like to introduce before you all our first expert speaker on the budget, Shri Ramdevji Agrawal. Ramdevji, please, you can unmute yourself and start your presentation. Good evening, friends. It's a pleasure to, again talk to all of you after a year. Though I am not a kind of economist to interpret the budget in a very meaningful way, but as a businessman, as an analyst, as an investor, we can figure out. And if we cannot figure it this time, in fact, the best thing is that finance minister tried to present the budget in an understandable way, because one by one she went, and it was a short budget speech. So a lot of what do you call it, small things were taken away, and she presented the meaty part of the budget, and it was one of the shortest budget speeches, and it was much more simpler to understand what she's trying to do in various sectors and the companies and the issues which people have, how she's addressing to that within her own limited means. So actually, if we come down to looking at the budget from a stock market point of view, because that's my prerogative, and that's where I come from. So my focus is on how to look at from a stock market point of view this budget. So actually, at one level, I can say it's a very positive budget, but a non-event, in the sense that non-event means today it is a great day that we have the budget has been presented, but it will have no meaningful impact in any of the sectors in a meaningful way, in the sense that broad direction which was there in the economy, and the COVID impact would of course be subsided, but basically she has not tinkered with the prospect of any industry in a direct fashion, because she has not given any demand booster to anybody, and it is just a supply side management, and with that, whatever happens to the economy, the positive impact of it, that is to be seen in the days to follow. But per se, textile industry, or say construction industry, or aviation industry, or hotel industry, there is no mention of any industry which has been given. It's a broad policy brush where she has tried to distribute her incomes to the people at large. So corporate profits, which is the foundation of stock market, that will actually become better and stronger in the days to come because of this budget. But this budget itself is not helping any specific company. But if
the GDP growth rate because of this budget. The assumption in the budget is that the economy will grow at about 8.5%. So if with a 4 to 5% inflation, so about 13% nominal GDP will grow and the real GDP will grow at about 8%. So with that, I'm assuming if that comes true because of whatever external internal factors in the budget, in that case, we are in a fantastic situation for the market, because market has two things, EPS and PE. So the earnings, the EPS comes from the earnings of the corporates, that will get stronger, and our companies will have a lot more business opportunities, and they will be able to grow their earnings in the current year. Now the P multiple side, though we are at reasonable P multiple, right now my sense is that after the budget, all the analysts, they will upgrade the EPS by 10 to 15 rupees. If the before budget, the EPS estimate for the Nifty was about 775, the estimate was about 875 rupees for the next year. It will become 885. Maybe some bullish guys, they will say 900. So at 17,000 का index, you are looking at, मतलब आपका जो P multiple होगा करीब 18 से 20 के बीच में आएगा. बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो 18 का आएगा, और थोड़ा पेसिमिस्टिक होगा तो 20 से 21 का आएगा. तो ऐसा बाजार का जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक है, बट what is most important in the stock market is the corporate profit. She has done nothing to disturb the corporate profits, and the momentum which is building up of the opening up and general strength in the economy, वो बरकरार है और वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो आप कैपेक्स करेंगे 7.5 लाख करोड़ का, देखिए आप बजट देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि 2014 से मेथोडिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी बढ़ा ही रहे. 2014 में उनका 2 लाख करोड़ था, लास्ट ईयर 5 लाख करोड़ था, इस साल 7.5 लाख करोड़ है. तो साल बे साल वो 25% से 30% से बढ़ाते आ रहे हैं. और इससे होता क्या है, आपको क्वालिटी ऑफ डेफिसिट जो है दैट इज इंप्रूविंग, बिकॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू डेफिसिट. सो बेसिकली दे आर बोरोइंग मोर एंड मोर फॉर फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, which is a good thing. It is not a consumption expenditure. It creates asset. It has a huge multiplier effect. So actually, cornerstone of this budget is the capital expenditure build-up, and that they are doing it methodically. So that will benefit some of the L&Ts of the world, the contracting companies, the cement company, the steel company. That those companies will have a better business prospect because of the sustained capital expenditure build-up. So that is one. Second. सेकेंड, जैसे मैं बोला आपको कि मोर ऑफ द सेम. देखिए सबसे बड़ा सेक्टर है पूरे इसमें इंडेक्स में, वो है आपका फाइनेंस सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ द एंटायर एनएसई, एंड सेकंड बिगेस्ट इज आईटी विच इज अनदर 25%. सो ये आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में क्या होता है कि आपको क्रेडिट ग्रोथ है, मतलब उनका मेन बिजनेस इज क्रेडिट ग्रोथ. सो क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 8-9% है, वो बढ़ के मुझे लगता है कि इट विल गो टू मोर लाइक 12-13%, 14%, एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी आपका 13% जाता है, मेरे को लगता है कि इस साल में the credit growth could be as high as 13-14%, and in that some of the banks will have disproportionate share of that credit growth. So I won't be surprised even the large banks of the order of ICICI, HDFC, Kotak and Axis, they might grow their credit book by maybe in the high double digit, maybe 18%, 20%, that kind of top line growth can come. Second is the credit cost. Because your economy is going to grow at 8%, a lot of companies, those who are in trouble, they will start doing well and they will start repaying their loans. So their credit cost, the bad loan cost will come down. So you have the higher income and lower credit cost. So the profit will expand meaningfully in the days to come. So that's why my sense is that the corporate profit led by banks will be doing well. In the same sector, you have the insurance. Insurance companies were impacted by the claims in last 2 years because of the whatever health crisis we had. And that led to the increase in the rates of a lot of my company guys, they say that for health insurance, they have paid 30, 40, 50% more the premiums. And the premiums rate have gone up, but next year starting post-COVID, hopefully the claims will come down and hence profit will again expand. So, there again you have a good chance of making money. So you have the banking, you have the insurance, and then third is the IT. IT is going through, irrespective of the budget, it is going through one of the most unprecedented bull run in terms of global expansion of
Indian IT. So what happened in Y2K? Now this is Y2K2, and here the size of opportunity is at least 10 to 20 times bigger. So, and these are the fantastically run companies, free cash flow, secular, growing at 15% kind of thing. Even Infosys is growing at 15-17%. So you have a great chance of these companies becoming very large companies, globally large companies, in the sense that you have TCS, whose turnover will be about 2.5 lakh crores, 2.5 lakh crores of services with a profit of 50,000 crores. So, these kind of companies are coming up. They are world beaters, and these companies will do proud to India. They have done proud to India and will become even bigger. Some people are saying that this industry is headed to become from $150 billion of export to more like $300 to $400 billion in next 3 to 4 years. So that's the kind of prospect which is building up here. And so this is the second largest corporate profit pool in the entire index. About 25% of all the profits in India come from the IT companies. So that is also going to do well. So these two, the banking, finance, insurance, and IT, these two itself will be about 55% of the index. And then you have the real estate. Now, real estate is one thing which is the closest to the retail, in the sense that everybody needs a house. So I think after 8 to 10 years, now the cycle has turned, at least for the houses. So the house sales were falling till 2 years back, and now it has come back with a vengeance. And I believe the momentum is picking up, and as the economy does well, more and more people are going to buy houses, and that has a huge trickle-down effect on cement, steel, paints, pipes, fittings, and everything. So I think, so you have a 2-3 very large cyclical upturn is happening. And that is, say, IT boom, then your credit cost decline boom, then you have the China plus strategy. What is happening is the world is wanting to buy more and more from India. See, India wants to export, that is one thing. But then the magic doesn't happen. Magic happens when the customer wants to buy more from India. And this time, like Y2K happened in India, not because India was good in software, because the world wanted to solve their problem of Y2K, and that's why they came to India. And now in 20 years, what has India become? Now in manufacturing, it is not that India obviously wants to sell more, but now the customers want to buy, diversify their sources of procurement from China to rest of the world. And that's where the India has a terrific opportunity. And government has also done in this budget also, whether it is a promotion of a lot of export-oriented SEZ policy itself is going to be changed. So Piyush Bhai has kind of put his stamp on the policy which we have seen in the budget. I think export is a big thrust area, and that's where I think again we are going to see some action out there. And let's see what is the final policy in the SEZ and all, and which kind of companies, manufacturing companies, they take advantage of that. But I think export side, your government expenditure side, your household expenditure into the building of houses. So these three are doing very well. Fourth is the private capex, which is जो private companies है, Tata, Builders, ये सब जो नई factories लगाती हैं, that would be dependent on the demand side. At the demand side, there is no booster. So my sense is it will take some time for the demand to build up, for the capex cycle to really go roaring. And that could be the back-ended, maybe spill over the next year. But I don't see any break in that. But the real momentum, which I was thinking she is going to use to boost the demand, and hence the moment the entrepreneur sees that there is a demand for their products, even before the demand has come, he will start putting the factory. But today, he will wait for the demand to emerge, and then only he will put up the new factory. So I think all of them are entrepreneurs here. They would know whether they are putting up capacities or not, all of them. And if that is going to come through, that is the biggest bet. Indian private sector demand, Indian private sector capex. Because once all these four are aligned, then you are sitting on a ultimate, India boom. And that India boom leads to the Indian corporate profits boom, and hence the stock market boom. So we are in a very, very interesting situation. Now, to this bullish
corporate profit boom situation, there is one caveat, that is the P multiple. P multiple is challenged because we are tailwinded for the corporate profits, but headwinded for P multiple. Because the US and the world has printed so much of money, there is a problem of inflation. Inflation all over the world, not only in India, world over. In fact, our inflation problem is very small compared to US, because in here, my bond rate is 6%, 6.5%. My inflation is also 6%. So the negative interest is maybe 1% plus minus. In US, their bond rate is 2%, whereas the inflation is 7%. So they are struggling with the 5% negative interest rate. So they have to really come heavily on the inflation. And that when they come heavy on the inflation in next 6 to 8 months, it will have global repercussion. हम लोग सब नौकर लोग होंगे. So it will it's a one village. When the America comes heavy on the their fiscal policy, monetary policy, it will have impact on India. So what I'm saying is that equity as an asset class will remain in corrective phase. If I hope that it doesn't crash, but it will remain in corrective phase on the multiple side. I'm very clear that corporate profits will boom, and but P multiples will tend, though this 18, 19, maybe it may come down to 17, 18 or something like that. So my best expectation right now for the market is to give a modest return of 10% plus and 10% plus minus, I would say. And it has nothing to do with the budget, let me tell you. It has nothing to do with the budget. We'll do well because our corporate profits are growing, our valuations are reasonable, but FIs are sellers. So what is happening is, another thing which is happening is the expansion of retail. This is unprecedented. It's a revolution going on. Every month in January 2020, 24 months back, the total demat accounts were 40 million. Today, it is 80 million. Every month, we are getting 3.5 million accounts. There could be some duplication, but still, market is expanding at rapid pace. And that's why when the FIs came to sell, all this retail, they absorb all the liquidity. And that's why there is a fight between the locals and foreigners in the marketplace. World is underallocated on India. At some point of time, 6 months, 8 months henceforth, these FIs are going to come to buy. When they come to buy, retail is not a seller. What will happen? They have to pay hefty prices. The cost of exit is okay, but cost of entry will be humongously high. You just watch it, but we don't know when it is going to happen. Is it 6 months away? Is it 12 months? I don't know. I have no idea. So that's why to make money in the market, you need 3 things: vision, courage, and patience. And patience is most difficult. So, I mean, you all are businessmen. You are successful because you have the vision, and you have courage to put your life to do those businesses. Same thing is in the stock market. But third thing you need to make money in the market, and big money, is to have a lot of patience. And that patience will be tested in next 12 months in Indian markets. I mean, equity per se, we had bumper time in last 2 years. This year will be a challenging time. I hope it is not so painful, but it will become painful because we have done too much of printing of money worldwide. And hence inflation dowsing will be a bit challenging. And hence I think and if we by chance do 10-15% negative return in next 12 months, then you are set for a bumper return year after that. Maybe it could be 40%, 50% year after that. So, it is a kind of crazy situation where companies are going to do well, stocks may not do so well. So it's all thinking. I'm just thinking aloud. I don't know what will happen, and that's why I'll stay invested in the market. Like your business is doing well, you don't care a damn about what is the stock price. You remain invested like a good entrepreneur. Same way, I'll become good entrepreneur or good investor in the market, and I will remain invested with the expectation that market might be 10% up in next 12 months, or it could be 10%, 12% down for the next 1 year. But with the firm expectation that I will make 15% compounded in next 5 years. In 5 years, my money will double. That's my thinking, and that's the thought process with which I approach the market. Remain optimistic, and the country is going to do well. It is in the safe hands. These people are very transparent guys. Nirmala Sitharaman has been very, very transparent. She has been very simple. She has spoken with a lot of clarity and no goof up in numbers.
In fact, I think the tax estimates are far, far lower than what they are going to collect. So, so we are in safe hands, and things look good except for the global inflation, on which I don't have any, nobody has any authoritative voice. What exactly will happen, how it will be controlled, and what kind of a negative effect it will have. Nobody knows, but that's the only challenge we have in next 12 months. So with this, I'll close my remarks, and I wish that all the entrepreneurs, they do well and they do even better in their portfolios. Thank you very much. Sir, we would like to have some 10-12 minutes more of yours. Thank you very much for such a, I mean, very frank, free, candid, and your own, from the heart opinion in a talk. My first question is, Ramdevji, is on your old formula of, buy, right, sit, tight. So when you said that you have to save for 1 year, are we still continuing that formula, that not necessarily 1 year, 2 years, 3 years, but we might have to wait for 5 years? Is that correct? Still holds good today also? Yeah. So long as the company is good, you should be good. See, आप जैसे आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो 30 साल मोतीलाल ओसवाल में मैं 30 साल से बैठा हूं, तो 30 साल के लिए अच्छा है, और वो अगले 30 साल अच्छा करे तो अगले 30 साल भी अच्छा है. उसमें क्या अंतर पड़ता है? Why should you see? इसमें क्या होता है, देखिए, आपकी इंडस्ट्री में आपको परचेज प्राइस का जो एडवांटेज होता है, दैट यू शुड साइकोलॉजिकली नेवर गिव अप. आपने 10 में खरीदा, भाव 1000 हो गया, ठीक है, 1000 वाला 500 हो गया, लेकिन आपने तो 10 में खरीदा ना. तो वो एक जो कंफर्ट होता है माइंड में साइकोलॉजिकली, कि भाई मैं बैठा रहूंगा, मेरे को डिविडेंड आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. कोई बिजनेस स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. नो बिजनेस मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. देयर इज ऑलवेज अप एंड डाउन, बट डायरेक्शन इज अप. So you have to see the underlying trend of the business, and since you know it so well, यदि आपको लगता है कि अब यहाँ से कहानी खत्म हो गई, obviously you can move. But buy right and sit tight, particularly for private money. आप लोग जो 50,000 करोड़, लाख करोड़ मैनेज नहीं कर रहे हो, आप लोग अपना 5, 10, 20 करोड़ ये कर रहे हो, उसमें तो इतना तकलीफ करने का कुछ काम ही नहीं है. आपको ये भाई लोग जितने बैठे हैं, इसी में आपको मिल जाएंगे 2-4 लोग जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. Yes, sir. We have some questions. Those who wants to ask the question to Ramdevji can raise their hand, virtual hand. We have Hemangi Singh. You had raised your hand. Would you like to ask any question, Hemangi? Or we go to Kiran Naik. Unmute yourself and ask your question. Sir, what is the call on precious metal? Precious metal like gold, you are saying? प्रेशियस मेटल पे आपका व्यू क्या है सर? नहीं, आप क्या गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर बोथ. So I don't have good understanding of this subject, but I am not a big fan of gold. So but I think now the inflation is building up in the economy. It could be a good hedge against the inflation. So it might do well, I would say. Thank you, sir. Thank you, Arunji, Dr. Arun Garg, Rotarian Arun Garg. Yeah, good evening, Ramdev ji. Very good evening, sir. I am a big fan of yours. What I wanted to ask you is, global FIIs are selling in like maddening since the last 1.5 to 2 months. तो क्या अपना डोमेस्टिक मार्केट ये प्रेशर झेल पाएगा? अभी ये क्या कुश्ती है, कभी वो रस्सा खींच है, कभी ये लोग खींचते हैं, कभी वो लोग खींचते हैं, लेकिन यदि रस्सा खींच में दोनों एक तरफ आ गए तो क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, हमको और आपको कोई चॉइस नहीं है, हमको तो यहीं खरीदेंगे, यहीं मरेंगे हम. हाँ जी, हम लोग अपने शेयर खरीदते रहेंगे. हाँ जी. लेकिन जो बाहर वाले हैं उसको बहुत चॉइस है, वो जो इंडोनेशिया में चलाता है, चाइना में चलाता है, कभी अमेरिका चला जाता है, लेकिन जिस दिन उसका दिल करेगा कि मेरे को इंडिया आने का है, हाँ, उस दिन शेयर किससे खरीदेगा? वो मैंने आपने सुना, आपने जो बोला. But अगर at the present situation, if you see, they are sellers like crazy. They will remain sellers. They will remain. Okay. My sense is they will remain sellers because they are following the global policy. They are following because their investors are in US. If they are redeeming the funds, they have no choice but to sell. Okay, thank you. And how much depend? 1 minute, sir. Ashok ji, last question. How much dependent are we on the foreign? See, they own very large portion of the market. They own 23-24% of the market.
But 23% of the market means almost 50% of the floating stock. In some companies, they own 70-80% of the floating stock. So they have a huge say. They are very powerful guys. Their funds are 80 billion, 100 billion, 200 billion. So the way they can sell and run away from here, Indian markets don't have that depth. But still, $1 billion, 7,000 crores, 5,000 crores, they are selling every day. And yet there is that liquid. In fact, more they sell, they will come with a bigger bang whenever they come. Because if we keep doing well, we're entitled to get their money. They will come. When? I don't know. But they will definitely come. Okay, thank you. Nilesh Barfiwala. Good evening, Ashok ji. Good evening, panel of speakers. Happy budget day to all. Sir ji, since last 1 or 2 years, what we feel, but budget in a broader concept. अभी पहले जैसा नहीं हुआ for a layman's के tax बढ़ाया, tax घटाया, what is that? Basically, it has become a very growth oriented, so very macro sort of a budget is there. इस साल का भी बजट में अगर देखेंगे तो for regular people कुछ है नहीं. Normally क्या होता है जब भी हम लोग बजट सुनते भी come with that करे टैक्स पे क्या बढ़ोती हुई, कटौती हुई, खाली वही अपने ध्यान में रखते हैं. What is your question, Nilesh? The question is that, see how this is a good change of focus from the government, that not looking into the micro level and coming into the macro level. So what effects as a normal human being it can be? Thank you, sir. So I don't have any question in that. No, Ramdev ji, no, it's basically a statement which he has given that this year budget is different than every year's budget, where they tinker with some small, your personal tax, individual tax, some item, some industry. So what effect it has? So, I mean, it is, I think, Nilesh, you had no question, but your own observation. Thank you for that. Ramdev ji, you would like to say something? Yeah, so basically what has happened is because of GST, indirect taxes is जहाँ नमक में भाव बढ़ा दिया, इसमें पेंट में गिरा दिया, ये सब जितना indirect taxes था, that has been taken away by GST, and that keeps happening through the year. So half the budget excitement is gone in that. Now second half is the direct taxes. Now in direct taxes, she has decided not to touch it at all. अभी इतना ज़्यादा corporate tax 25%, incremental new manufacturing companies 15%. आपका जो पर्सनल टैक्स है उसमें थोड़ा हम लोग को जितने यहाँ पर ऑडियंस है उनको थोड़ा धक्का लगा है, वो 40-42% कर दिया for the guys. I think they earned 5 crores. So वो भर एक तकलीफ वाला है. बाकी इस बार कैपिटल गेन्स टैक्स में भी थोड़ा सा फायदा दिया है. But basically direct taxes is the main interest. सैलरी वालों को टच नहीं किया है. So basically it has become a statement of their own income and expenditure and the direct tax provisions, if at all there is one. So it's actually the scope. In fact, budget is not discussed anywhere in the world except for India. So I don't know why this particular thing, but basically budget is no event anywhere in the world, nowhere. So we are touching almost 600 participants now. There is somebody from Shimla. I could not read that. Do you want to a question? You want to ask a question, or you are just writing something on chat? Okay, before he comes in, there is one Mr. Puran Agarwal. Unmute yourself and ask your question, please. Puran? Yeah, thanks a lot, sir. Thanks for allowing me. Mr. Ramdev ji, I'm very big fan of yours. I have been reading a lot about you, your videos and all. My question, sir, on cryptocurrency adoption, because in the last many years, last 4-5 years, we have been talking, but at least we have some clarity. So looking at, how it is going in China, US and many other countries where, it's being adopted. What's your view for India? See, I think today she has summarized it. She has put 30% tax without set off. So basically it is banning. I mean, it is a message, you must get it. But उसके बाद भी आपको करने का है, दुबई से करना है, कहीं और से करने का, उधर से अकाउंट से करने का, तो आप करिए फिर. So basically the thing is, it is a speculation. 100% speculation है, और speculation में तो आपको मालूम है outcome क्या होने वाला. 100 में से एक आदमी कमाएगा पैसा, बाकी 99 गवाएंगे. अभी, so whether you want to join that race or not, that's your part. Mr. SP Kati, please unmute yourself. Mr. Kati or Mr. Kanu Kanthed, Miss or CA Anu. Yes, yeah, I am able to unmute myself. Good evening, sir, and Ramdev sir. Sir, my question is simple, that there are many shares which are performing good and which are having excellent fundamentals, but they are not moving much because they are not in the eyes of everyone, or it is not like discussed on TV.
Apart from that, there are like some kachra stocks also. But yeah, ये मतलब फंड्स वगैरह और ऑपरेटर लोग उसमें बहुत पैसे लगाते हैं तो वो हेवीली मूव करता है। तो सर मेरा बस ये मेन क्वेश्चन है कि फंडामेंटल्स की तरफ ज्यादा खिंचाव होता है या फिर जो फंड्स और ऑपरेटर ज्यादा करते हैं उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है? I mean, I'm not getting your question. I mean, Ashok ji, can you tell me the question? नहीं मतलब फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा जाना चाहिए या इतने सारे ये सब जो मार्केट में चलता है ये इसके ऊपर? हाँ, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि आप तो फंडामेंटल पे ही मेनली। No, fundamentals and whatever works for you. See, there are million guys, million ways of making money in the stock market. आपका रास्ता कैसा है? जिससे भी पैसा बनता हो, किसी मेरे हिसाब से आप नहीं कमा सकते और आपके हिसाब से मैं नहीं कमा सकता। Whatever works for you. I mean, I'm talking about investing. इन्वेस्टिंग में आपका जो भी स्टाइल है, आपका जो बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आप अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप पैसे कमा रहे हैं 10 साल से, डोंट बॉदर अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, बिकॉज यू कैन नॉट बी द अदर गाय। सो यू हैव टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्मॉल guy can maintain his individuality. He doesn't have to follow Warren Buffett or anybody like that. He can make his own style and he can make your own money. थैंक यू अशोक जी। भाई साहब अशोक जी अग्रवाल, आप भी भाई साहब पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ, मैं रामदेव जी नमस्कार, अशोक अग्रवाल, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन। मेरा एक चीज जानना था कि आज एमएसएमई को लेकर के और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस किए हैं रिलीफ देने के लिए। अभी स्पेसिफिक नहीं कि कैसे क्या लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पर पास्ट के एक्सपीरियंस देख करके ऐसा लगा कि कोई बूस्टर डोज नहीं था वो। क्या लगता है आपको कि क्योंकि एमएसएमई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स इकोनॉमी को लेकर के, तो व्हाट इज योर फीलिंग? I told you in the beginning, I'm disappointed with there is no demand booster out there. लेकिन हमारी समझ शायद कम हो सकती है क्योंकि इकोनॉमी काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और सो क्लियरली जो ये हादसा हुआ है इसका कोविड का, उसके बाद जो एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम रिक्वायर्स अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स। सो अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम है, अनकन्वेंशनल स्टेप्स होने चाहिए। तो जो डिस्ट्रक्शन है एमएसएमई का वो उसको वो ठीक तो हो जाएगा। आगे पीछे 20-30% परमानेंटली बंद हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे 50-60-70% वो डेफिनेटली वापस आएंगे, लेकिन स्लोली वापस आएंगे क्योंकि उनके रिसोर्सेज कम रहेंगे। उनको ऑफकोर्स बैंक से सपोर्ट रहेगा, लेकिन जैसे डिमांड खुलेगा तो जैसे शादी, मैं तो बोलता हूँ 10% ऑफ जीडीपी इज ओनली मैरिजेस। एक बार मैरिज चालू होगा अच्छे से पूरा नॉर्मल वे से 3,000-5,000 लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ बूस्टर टू दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बट राइट नाउ देयर इज सो मच ऑफ what do you call restriction in any kind of festivities, movement, parties. So I think a lot of people are suffering with that. So I don't know, I mean, what government could have done, but I think it will be a slow to recover. I'm quite sure, and some of them will permanently close down. And that market share. भाई साहब ECLGS में 50,000 करोड़ और बढ़ाया है, 5 लाख करोड़ किया है और उसकी डेट भी एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2023. So this is actually a direct benefit to some of those units which are suffering. With this, Prakash Samudra ji, you can unmute yourself and ask a question. We will have only 1 or 2 more questions. Yeah, thank you, Ashok, and Ramdev ji, can hear me? Sorry. Can we take it as the last question, please? Okay. Yeah. Okay, I'm sorry, friends. Only but Prakash Samudra ji's question is the last. Yeah, Ramdev ji, I know last so many years we are hearing that the private sector has to invest in the projects or in the production unit, manufacturing unit. It is going very slow, and every time people say they should invest. What is really happening? They don't have trust in the business here, or what's the problem? Who is expecting me? I mean, I don't get the rest of the question. See, the last so many years we are saying that private sectors must invest into manufacturing, into production, right? And every time budget comes and they say we should woo the private sector. Now, what's really ailing them? They have money, they have funds, they have plans. Don't they have trust in the whole thing, or what? Why can't they invest? So you are saying that private sector doesn't have trust, or the government doesn't have trust on the private sector? Private sector. They should invest money, in projects. No. Sir, private sector is very smart in the sense that anywhere in the world, you are not a charitable guy. You are saying that I will invest when there is demand.
You create the demand, you don't have to ask anybody. They will put it up. यदि आपका कैपेसिटी 2 लाख कार का है महीने का, यदि डिमांड 5 लाख का होगा, वो अपने छत के ऊपर बनाएगा, 4 शिफ्ट करेगा, लेकिन वो बनाएगा आपको 5 लाख. लेकिन यदि डिमांड 1.5 लाख का है तो वो थोड़ी नया फैक्ट्री लगाएगा. क्या करेगा फैक्ट्री को? Thank you very much. With this, Ramdev ji sahab, you for sparing such a valuable time on a budget day itself, which you are doing every year for us. And I hope all our participants, 632 now, must have been benefited immensely with your talk and the answers to the questions. Thank you very much. With this, I would request our next speaker, Shri SP. I will welcome him. And before I request him to start his talk, I would like to introduce Tulshan ji. Tulshan ji has been very kind to have come in on time. A chartered accountant come company secretary, along with law and commerce graduation. SP Tulshan ji is a name to reckon with in the Indian capital markets. Investing and advising on the stock markets has been his passion and the way of life for the past over 4 decades. In fact, I know him personally for last almost about 43-44 years. He started a hugely popular and well-respected weekly tabloid, Premium Investments, as its editor and publisher in January 1990, published in 3 languages, that is English, Hindi and Gujarati, which went on to become the highest selling publication amongst over 60 financial periodicals at that time in India. Adopting to the change of the time in 2007, the tabloid evolved into an online portal providing timely and apt investment advice on www.sptulsian.com, which Tulsian ji is today the editor and CEO. Making regular appearances on the prominent television channels like CNBC TV 18, CNBC Awaaz, and many of the other channels. His quotes on the M&A, important corporate actions, union budget, specific industry-wise development progress are often considered to be the last word. The print media also relies on his advice, and he is often quoted in many of those famous print medias. With this, ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing before you my very good friend, Sri SP Tulsian ji. Tulshan ji, you are mute, sir. Yeah, can you hear me now, Ashok? Yes. Thank you, Ashok, for nice introduction. And just to make some correction there, I've stopped my appearances on appearing on all television channels for last 15 months because of my pre-commitment in some other revenues and all that. So now I'm not appearing in any of the channels. So that is just the correction. Rest part is all fine and perfect. So now let me start here with the budget. I will only be touching on the points which are relevant from the capital market point of view. I will call it as a path-breaking budget, revolutionary budget, and in continuation to the budget what we have seen last year presented by the FM. Now, first point which we all see here, because we loosely, because we are very fond of referring all these standard things. What is the fiscal deficit? What is the deficit and this, all those things? And if you see, maybe I have not seen any channel and all those things, but many people must have talked on the fiscal deficit and all sort of things only. Now, let me just start here that if you see the fiscal deficit having given for FY23, that is at 6.4%, and for the current year, it has been revised upward to 6.9% from 6.8%. The best part is that if you want to understand the fiscal deficit part or maybe the deficit, there are 2 components to always in the budget. One is revenue deficit, and second is the fiscal deficit. If you see for all the budgets, if you refer maybe for last 10 years, you will always find the revenue deficit being about 50% of the fiscal deficit, of the total deficit. So my point is that the relevant deficit is also revenue deficit, which we must consider while taking a call on the budget. Now here, if you start with just to give you a perspective, in FY 1920, the revenue deficit was 2.4% against fiscal deficit of 4.6%. That means it had about 52% of the deficit has been taken for the revenue deficit. Similarly, for year 2021,
the revenue deficit was 68% of fiscal deficit. But if in the current year in this budget, the budget which has been presented for next year, that is FY23, the revenue deficit is at 40% of the fiscal deficit. Now it's very, the accounting people, we are all accounting people, we understand these common words of revenue deficit and fiscal deficit. Revenue deficit means the आपकी जमा खर्ची जो आपने कितना कमाया और कितना खर्चा किया उसके सामने, that means the salary and all sort of things, the grants, the subsidies, the this and that, all those things taken away by the revenue deficit. So if the government has or the FM has curtailed the revenue deficit to 40%, obviously the 60% portion has gone for the capital expenditure. So that's the best part I've liked in this budget, is that the proportion of revenue deficit has fallen to 40% against usual ballpark 50% on an average for last 10 years. I've already given you the figures for last 2 years. 1920 it was 52%. In 2021, it was 68%. One can understand for 2021 because that was a COVID year, so maybe revenue expenditure and all sort of things. So what used to happen that the जितना भी income होती थी हमारे देश की, हमारे सरकार की, उसका major पैसा subsidy, ये फालतू काम जो बोलते हैं ना मनरेगा and all those things, where the assets were never getting created. कभी भी assets नहीं बनाए सरकार ने. But now in this budget, for the first time, I've seen that the assets are all created. That means 60% of the deficit has gone for the fiscal deficit, and only 40% of that has gone for the revenue deficit. This is the very positive point. And let me tell you, I will take up each and every point very quickly. And this is going to get liked by the FPIs like anything. That means they will have the confidence that there won't be any corruption. The transparent spending will be there. Already the continuation of the policies of the government is there of continuing with the creating the public capital expenditure. So that's one part. Coming on the second part, which has been all talked now by the people. In fact, in my advisory portal, I got about 150 queries where they've been asking on the divestment target. That the divestment target has been pruned to 78,000 crore for FY22 against 1,75,000 crore, and for the next year it is 65,000 crore. Now let me just make the things very clear here also, that for the current year, which we will be ending maybe after 2 months on 31st March 22, that means 2 months of this financial year, they have pruned the divestment target to 78,000 crore, which was earlier at 1,75,000 crore. Now, how this 78,000 crore will be achieved? 12,000 crore has already been achieved by the government till in this first 10 months of the FY22. Now, remaining 66,000 crore, 78,000 crore minus 12,000 crore is the 66,000 crore target they have to mop up in this financial year. Now, in my view, if you see the LIC IPO is going to see the light of going to get concluded in this financial year, will get listed by 31st March. And if you go by the ballpark figure, though LIC has not filed the DRHP with SEBI, they probably will be filing in the next couple of days. So once they file the DRHP, we will going to get the valuations and all those things known. But the street figures or the discussion which we all carry out, the pre-IPO and what you call exercises, I think the IPO is valued, or the LIC is valued at an enterprise value of about 12 lakh crore. 12 lakh crore means it doesn't have any debt because this is an insurance company. They don't have any borrowing. So 12 lakh crore, of that about 6 to 8%, because government, I don't think that government will offload 10% stake also even in an LIC, because they've been exempted by the SEBI also, that they can go for 6 to 8% also of the dilution in the first phase. So maybe about 6 to 8% will get diluted, even if I take 12 lakh crore as a ballpark figure, and it takes 6% dilution, because it all depends on the appetite of the FPI's response and all that institutional investors, how much they respond to the government in this issue. So even if I presume 12 lakh crore as the EV or as the fair valuation of IPO of the LIC, and 6% dilution comes to 72,000 crore. And as I told you that 12,000 crore has already been mopped up, and even if you take 70,000 crore ballpark, this gives you about a total value of about fund mobilization of about 82,000 crore. So of that 82,000 crore, already government has set a target of 78,000 crore for this financial year. So I don't think that anybody should have any doubt about the achieving this target of 78,000 crore. But this gives us an indication that probably in this financial year, we will not see any other strategic sale. That means maybe of BPCL or maybe of Shipping Corporation of India and all blah, 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 blah. So yes, for the current financial year, 78,000 crore, I don't think that there should be any doubt in mind of any investor. They will be able to achieve that. Come for FY23. FY23, the government has estimated divestment target of 65,000 crore. Now here, let me tell you
just to give you, because I'm closely tracking this sector and this segment, there are at least about 10 to 12 companies lined up for financial for divestment in FY23. Now, it is good that government has not given the name, because last time, if you all recall, FM gave the name of 2 banks, PSU banks, and 1 general insurance company, which will get divested in the FY22, which did not happen. So this invites a lot of criticism, maybe because of the COVID and all those things. People will not collaborate that statement, that if the things would have been normal, probably government would have been able to do the divestment of those companies. So now here government has not narrated that what all companies they will be looking to divest. But in my view, if you really ask me, 2 companies I've identified for FY23. In my view, that can happen maybe in the next 3 to 4 months itself. They will surely be doing that in the first half only. So one could be BPCL. If you take the present market price of 378 rupees BPCL, it gives a market cap of about 82,000 crore. And 53% of that is held by the government. So 44,000 crore can get mopped FY23 alone from BPCL. Second is a residual stake sale in 20 in Hindustan Zinc. If you all recall, when Hindustan Zinc was divested by the same government, NDA government in 2002, they are left with a 29.5% as the residual stake in the company, that is in Hindustan Zinc. All along there, the government has been fighting that matter with us before the Supreme Court, and Supreme Court about 3-4 months back has delivered the judgment that government can go ahead with the selling of the 29.5% residual stake to any party or any methodology they want. Now, if you take this 29.5% valuation based on the current market price of today, that is 318, it gives you a valuation of about 40,000 crore. So even if you take these 2 companies, 44,000 crore from BPCL and 40,000 crore from HP, from Hindustan Zinc, they should be able to mop up 84,000 crore. Maybe for FY23 against target of 65,000 crore, which they've set, maybe in the first 6 months of the next financial year only. So again, if you really ask me, government has been very what you call pragmatic and practical in not giving the name and not making it ambitious, the targets of maybe 1 lakh crore and all sorts of things. So once this target of this 80,000 crore or 75,000 crore or 65,000 crore gets achieved by the government in the next for the next fiscal in the first half itself, that will be seen very positive. Apart from that, there are many companies which I have been having as a probable candidate of disinvestment, which if you all want, I can just narrate. NALCO, that is National Aluminium, Hindustan Copper Shipping Corporation, Concord, Bank of Maharashtra, IDBI Bank, BML, and 1 PSU bank and 1 insurance company. So if you add up all this value of all these things, that gives you a value of about 1 lakh crore. Now it's not very sure. Now take for instance in BPCL, tomorrow government may decide to divest maybe 40% or maybe 30% and say that 26%, 25% let him make the open offer, then balance money they may keep with themselves. So the structuring and the proportion of divestment is not known, but in my view, this government has taken an excellent step of divesting the companies with a lower expectation of 65,000 crore for next financial year and 78,000 crore for this financial year. So this is going to be the game changer for the stock market once the process will start happening, and probably LIC IPO will start the ball rolling, because Air India disinvestment has taken a little longer time. If that would have happened 3-4 months back, then probably they would have been able to complete 1 or 2 more disinvestment in this financial year, but doesn't make any difference. So this is on the divestment front. Come on the outlay for capital expenditure has been raised by 35.4% to 7.5 lakh crore in FY23. As I have referred in the first point, that revenue deficit is very low. So obviously the amount has gone for more for the capital expenditure, maybe for defense, maybe for digital, maybe for agri, maybe for EV and all sorts of capital expenditure and all sorts of things. That is going to be a very game changer. 35% increase has been made by the government in the capex of 7.5 lakh crore. And if you take the grant in aid to states, and you add that this amount comes to 10.68 lakh crore. If you have 10.68 lakh crore spending, you can understand the kind of growth which will be seen in the economy, maybe in the form of rural jobs, maybe in the form of cement steel consumption, maybe in the form of all other benefits and also, and which will be sustainable assets. Let me tell you that those assets, once will get created, will keep contributing to the exchequer every year, because we have not spent on the Manrega or maybe on the salary and maybe on the useless subsidy kind of things. Come on the focus on agri infrastructure, there has been top the priority. One, if you have noticed this in the budget, Kane Betwa link project at a cost of 44,000 crore, which will benefit to the 9.8 lakh hectare farmers lands. 9 lakh hectare means about
maybe 25 lakh acre. Because we are all familiar with the acre terminology, so about 23 lakh acre, which will help the 9.8 lakh for this land, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro project and 27 mega of solar project. And in this project of about 44,000 crore, government has already allocated 4,300 crore in the current year, and they are allocating 1,400 crore in the next year. So that means this project is going to see the light of the day. Come on the next plans, because my focus is more on the capex which the government has what you call narrated and tabulated for spending or made the allocation. Apart from this, there are DPR, detailed project report of the 5 rivers interlinking has been prepared. Best use of harvesting techniques, digital ecosystem for skilling and livelihood. Startups will all be with the drone Shakti. So these are the capex, which the government has kept its focus high on the new generation project. They've talked of the defense technology. They've talked of drone. They've talked of the EV. They've talked of the pollution control. They've talked of the green energy. All sort of things. That is not missing on the merely on the 1 year's annual budget. They've taken focus on all the points, all these areas and these projects. Then come on the Har Ghar Nal Se Jal coverage. In fact, this has been a very silent what you call achievement of the government, which they have been implementing, which we will, the way we have seen the Swachh Bharat Abhiyan in 5 years, we have seen the complete open what you call this sanitation getting stopped. In the similar way, we will see this Har Ghar Nal Me Jal, Har Ghar Mein Nal Se Jal. In this, if you see that the target was of 8.7 crore household. Of this, 5.5 crore households have already been provided the tap water in last 2 years. That means about maybe 3.2 crore households have remained. Of this, an allocation of 60,000 crore has been made to cover 3.8 crores houses in FY23. And in FY23, 80 lakhs houses will be completed under PM Awas Yojana, both rural and urban. So that means water projects and the Awas Yojana, both will be going simultaneously in FY23, which is allocation of about 1 lakh crore or 1 lakh 8,000 crore. So this will going to be very big game changer. Maybe the PVC pipe makers or maybe the cement companies, maybe steel companies, they will all send to gain good amount. Under Atmanirbhar in equipment for the armed forces, 68% of capital procurement will be from the domestic industry in FY23, up from 58% in 22. That means the government has been increasing their allocations in the defense, largely procuring from the domestic people. 58% in current year to 68% in the next year. That is a very big allocations made for the local manufacturer. And 5G telecom will all be provided with a very good facility of the required spectrum will be auctioned in in 22 to facilitate the rollout of 5G mobile services in 23 by private telecom providers. So telecom, all these core sectors, telecom, optical fiber, defense, or maybe this EV automobile, they will all be seen very positively gaining from all this. Now come on the revenue estimates. As I've said that the deficit which you have talked of 6.4%, if you see the revenue estimates which have been made by the government, generally again in the past, I'm not trying to criticize any regime here, but generally if you see that always in the past, or maybe I would say that in the last 5 years of UPA, the budget drafting used to be so loose that in last in revenue estimations, they were always been very extraordinarily charitable in taking the higher projection. But if you go here, this budget has taken a non-corporate tax rate growth of about 13.4%. Now, let me tell you first, before that, here I would like to say that the GDP, which was at about maybe 230 lakh crore, that is about $3.07 trillion for this current year, has been estimated to grow to 260 lakh crore GDP. If you go by the relevant data and all those things, and that works out to $3.47 trillion. That means there will be an increase in the $0.4 trillion of our GDP in the next year. That translates into a growth of about 13.1%. That means the nominal GDP growth has been estimated by the FM in her budget at 13.1%. Now, if you take the maybe inflation of 4.1% or maybe 4.5%, or 5.1%, the GDP, in my opinion, should be between 8 to 9%, though the government has indicated it to be at 8 to 8.5%. So there will be better surpassing on the nominal GDP front as well as on the actual GDP front. So here, the 13.1 point, if you have an estimation of nominal GDP growth of 13.1%, generally by going by the past experience, the listed companies, being the
being the compliant corporates, they always have a 1.5% higher tax growth. So here, instead of taking the corporate tax growth of about maybe 13.4%, if you're estimating a nominal GDP growth of 13.1%, you can take the corporate tax rate growth of maybe about 18%. But here the FM has taken that as 13.4% only, and non-corporate tax of 14.3%. That means the tax rates estimates, the revenue collections are seen to be on the lower side. In fact, they will surpass, in my opinion, looking to the growth which we are expecting to see, and the way the COVID is seen to be tapering off. In fact, Omicron also has not spoiled so much this time. So maybe if God is helpful to us, we will be seeing good surpassing these all tax revenue collections as well. So my point is that the revenues are all estimated on the lower side. The expenditures are all for the productive assets, for the capital expenditure, no wasteful expenditure. So all these things are going to get achieved by the government in their plans and all that. Now coming on the other areas, the populist measures are not there. Maybe like of maybe Manrega subsidy and all that. And even if you see the spend on the agriculture, the purchase of 2.3 lakh crore for rice and paddy has all been for the government. Some people say that okay, this meant that what you call distributed clear the food stock which government is holding of 87 lakh ton and all sort of things. But just imagine, and if you have the drought for 1 year or maybe 2 years, or maybe things are not proper, maybe on the rain god is not kind, what will be the situation? So I think government is not taking the pragmatic view, and this budget is going to get liked so much by the FPIs and the foreign investors and the funds and all that this is going to be a path-breaking budget and will be a game changer. So overall, I don't see any reason, and in fact, I've given my index target is Nifty, which is ruling at 17,570. Though generally, I never give any credence to the index levels. Maybe because we are not investing in the index. So what is the point in taking that call? But just for satisfaction, the 17,577, the Nifty which closed today, can rise to a level of 21,000 by next budget, and BSE index, which has closed at 58,860, can rise to a level of 70,000 by next budget. So this is my nutshell, the whole the gamut of the analysis of the budget which has been presented, and I see excellent opportunity for the investors going forward, because I've taken a 20% growth in the Nifty level. So stocks can give you a return of as high as maybe 30% also. It's an art of stock picking, not the art of playing on the index and not the art of playing on the speculation. So I'm quite hopeful and I'm quite bullish on the budget as well as on the market going ahead. And this is my submission. Thank you very much. Thank you, Tulshan ji. Wow. Several years back, one very top market player for investors in the market, he just gave the target of Sensex to 30,000. And somebody asked, why not 50,000? And he replied, why not 70,000? It's an India growth story. And today, you are making it almost a reality, something which just went on the frenzy, of discussion, that next year, by next year's budget, we might see 70,000 Sensex and 21,000 Nifty. And your great analysis of these numbers, this kind of analysis, nobody, generally gives, and you have got that analytical skills to basically, connecting it with the budget numbers, and that then in turn, what growth it is going to give. So thank you for that. And we will take, sir, a few questions, because we have some time left for, the time which was there for you. So if Mr. SP Kati, last time you had raised the hand, your hand is still raised. Would you like to ask a question? If not, Mr. Balraj, please unmute yourself. Yes, sir. Hello. Good evening, Mr. Tulsian. You are an expert. My question may appear to be very crazy. I just wanted to know, are there any cruel players in the market? A 3 rupee share just about 4 or 5 months back is now trading around 150 to 200 rupees. Example, Tata Tele. Well, how come this amazing change in a very short span of time? Mr. Balraj, firstly, I'm a fundamental analyst. I don't look after all this market making and all sort of things, speculation and all kind of that's number one.
Number two, my sincere advice has been to all the investors that don't run after and don't get carried away, don't get swept by these all type of up moves, in the market. Because if you really see the Tata Tele, since you have given me the example, we do keep a track, but that's not necessary that we be advised to invest. If you see the stock, I think was about 300 rupees a month back. Today it is lower circuit, maybe 150 rupees. And I think that the fate will be that it will come definitely the 2-digit. And I won't be able to give you any kind of bullish or maybe any kind of sympathy that this company is carrying any kind of fundamental. Now come on the reason that how it moves up, that as I said that I may not be able to give you any answer because I'm a poor fundamental analyst. Yeah. Thank you, Mr. Purushottam Somani. You had raised last time also, but I think your turn did not come. Yes, please unmute yourself, sir. Tulshanji, since we heard you, sir, since last many years I am hearing, but since you said recently that you, and we have a very high regard that the fundamental companies you suggest, my only submission, will you suggest, sir, 2-3 companies specific? So we focus for 2 to 5 years. And since Ramdevji also indicated that the 5 years will be the period which will double in this thing. So be specific, 2-3 skip of your choice. If you can suggest, we will focus, sir. Thank you. पुरुषोत्तम जी, ऐसा है कि सोमानी जी, ऐसा है कि मैंने हमेशा स्टॉक्स का रेकमेंड किया है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती देने में। पर जैसे अगर आप लोगों को याद हो 19 अगस्त 2020 को जब सीएनबीसी पे आने के 2 महीने पहले मैंने स्टॉक किया था, सीजी पावर मैंने कहा था 15 रुपए में, और मैंने कहा था कि 1 साल में इसका भाव 100 रुपया हो जाएगा। मैं तो टारगेट भी देता हूँ साथ में। और मैंने कहा था 19 अगस्त 2000, जिसने भी देखा होगा, मेरे को मेंबर मेरे लिखते हैं कि सर आपने 19 अगस्त को 2020 को लिखा था कि टीवी पे कहा था कि 15 रुपए का शेयर है, 100 रुपए 1 साल में हो जाएगा। तब उस वक्त जो एंकर था, मैं उस एंकर का नाम लेना चाहूँ, उसने मुझे थोड़ा नेस्टी लुक दिया कि तो ऐसे 7 गुने की बात करें, जन स्टॉक का ऐसे इनको क्या है। वो आज 180 रुपए के भाव पे चल रहा है, 200 रुपए। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास कन्विक्शन है, आपके पास पेशेंस हो, आप 180 रुपए में लेकर के बैठ जाइए सीजी पावर। इट कैन कीप गिविंग यू 30% एनुअल रिटर्न फॉर नेक्स्ट 5 years. दैट मींस इट कैन गिव यू प्राइस, यू कैन सी अ प्राइस ऑफ 500 रुपीस इन नेक्स्ट 4-5 years. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आदमी मैं कहता हूँ 500 रुपए 4-5 साल में, वो 4-5 साल को निकाल देता है। बोलते हैं 500 रुपए का था, तुलसी जी ने यार 170 का कल 160 हो गया, छोड़ो यार, तो ऐसे ही होता है। तो अगर आपको पेशेंस है और आप ट्रूली इन्वेस्टर हो, तो एक तो है सीजी पावर, दूसरा है अडानी एंटरप्राइज। जैसे अडानी एंटरप्राइज का भी इशू आया था, अडानी विल्मर का। अडानी एंटरप्राइज के पेरेंट कंपनी अपने नए नए बच्चों को निकालते, उसमें इंक्यूबेट करती है, उसको अलग कंपनी बना देती है। अगर आप देखें कितनी भी कंपनियां, चाहे जैसे आज ही अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ हो गया। लोग बाग बोलते हैं अडानी तो ऐसे ही है, अडानी तो ऐसे ही। मुकेश अंबानी के लिए भी 2 साल पहले लोग बाग ऐसे ही बोलते थे, और ऐसा लट्टू हो रहे हैं रिलायंस के ऊपर 2400, जबकि हमने रिलायंस पे 1200 रुपए में बाई कॉल दिया था, 2400 में सेल कॉल दिया था। तो खैर, कमिंग बैक, आपने स्टॉक्स का जो नाम पूछा, तो अडानी एंटरप्राइज वुड बी द सेकंड स्टॉक। तीसरा स्टॉक है जीआईटीएफ इंफ्रा, एक छोटा सा स्टॉक है, बड़ी बिकॉज हमारी मेरी महारत है मल्टी बैगर में आइडेंटिफाई करने की। जीआईटीएफ इंफ्रा हमने 20 रुपए में आइडेंटिफाई किया था। सर ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है, इसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस में प्रेजेंस है। वेस्ट इंसिनरेशन मतलब वेस्ट म्युनिसिपैलिटी के वेस्ट को जला करके उसे पावर बनाना, पावर प्योरिफिकेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट में। आप इसका बिलीव नहीं करेंगे, मार्केट कैप है 400 करोड़ रुपया। अभी 125 रुपए 130 रुपए पे लिस्ट हो रहा है। आपको मार्च तक 2 महीने में आपको 200 का अवार्ड दिखेगा, 2 महीने में, बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है। तो अगर आपने ताकत है, आप 5 साल के लिए रखें, तो आपको कुछ का कुछ इसका भाव देखने को मिलेगा। मे भी 1000 रुपए भी हो जाए, बिकॉज ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी, और जिसका 2000 करोड़ का टॉप लाइन होगा 15 अगले साल में, वो कंपनी 300-400 करोड़ के मार्केट कैप पे चल नहीं सकती। इट्स अ नो ब्रेनर। आप लोग जोमेटो अगर को देते हो इतना बड़ा पैसा वैल्यूएशन, और कि उसके टॉप लाइन की ग्रोथ पे खाली, और यहाँ पे कंपनी टॉप लाइन एबिटा लेवल पे पॉजिटिव है, तो वो एक स्टॉक हुआ। फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर, हम लोग हर बार मल्टी ये क्या बोलते हैं, मल्टी बैगर या लो प्राइस स्टॉक्स पे हमेशा एडवाइस नहीं करते हैं। हमारा हमेशा वो रहता है कि आप अपने उसमें वैल्यू देखिए, क्या कि ग्रोथ दिखाई दे रही कि नहीं। जैसे सीजी पावर जब हमने आइडेंटिफाई किया था, उसका कारण था कि वो मुरुगप्पा ग्रुप उसको ले रहा है, जो उसमें पोटेंशियल था। वो तो थापर ग्रुप की बेवकूफी थी, गौतम थापर की, कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के इतनी बड़ी कंपनी को रूइन किया। तो मे बी सीजी पावर, मे बी अडानी एंटरप्राइज, मे बी जेआईटीएफ इंफ्रा, फिर मैं आपको बोलूं एचडीएफसी, टीसीएस, एचसीएल टेक, वो तो कहेंगे सब, वो तो सब हमको पता है, वो तो सब हमको पता है। तो कुछ इसमें, और मे बी वन कुड लुक टू टेक एक्सपोजर इन हिंदुस्तान कॉपर, वो भी आपको 3 साल में 4 साल में 3-4 गुना दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है सबके बेनिफिट के व्यूअर के लिए, जो मैं सजेस्ट करूंगा। Excellent, thank you very much, sir. But one more thing. No, please. I don't know whether it is related to you or not. Purushottam ji, give the chance to others, please. Mr. Atul Kedia ji, unmute yourself. And thanks Tulshan ji in the meantime for giving
so solid opinion about some stocks. Atul ji, अनम्यूट कीजिए आपको. हाँ यस हाँ यस सर. नमस्कार जी तुलसियान जी, मेरा डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन था. गवर्नमेंट इज वेरी अग्रेसिव ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लेकिन जैसे आपने भारत पेट्रोलियम की बात कही, तो जो पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण जो ये लोग प्राइसिंग को, जो इवन दो दे टॉक ऑफ फ्री इंटरप्राइज, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस जो अंडर चेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, इलेक्शन इश्यूज, या समझ लीजिए पब्लिक जो ग्रेवेंस के कारण, तो उसके कारण जो डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, इज इट नॉट गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ओन पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल डिसइन्वेस्टमेंट इन द इयर्स टू कम? जी ऐसा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जो ऑयल का सेक्टर की अगर आप बात करें, वहां तो मुझे कोई अड़चन आती दिखाई दी नहीं. अगर आप देखें आज अगर क्रूड का जो भाव था $80-90 से ब्रेंट के ऊपर नहीं गया, फिर भी भाव सरकार ने $100-110 पेट्रोल आपको खरीदने में मजबूर किया और किसी ने चिल्लाचिल्ली नहीं की. अब लोग बाग बोलते रहे कि साहब जब कांग्रेस के टाइम पे $150 का भाव था तभी भी इतना भाव नहीं हुआ पेट्रोल का, क्योंकि सरकार, सभी जानते हैं कि सरकार जो है वो जो एक्साइज ड्यूटी जो एक्स्ट्रा कलेक्ट की उससे कुछ ना कुछ देश के लिए मजबूत एसेट्स बना रही है. तो आई डोंट थिंक कि ये अपनी भ्रांति, अपनी भ्रांति में झूमते रहते हैं कि सरकार की अभी ओएमसी तो आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड बाय एपीएम जो है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, वो तो कब का डिसमेंटल हो गया. एवरीवन इज गिवन द अथॉरिटी टू फ्रीली मार्केट. एसआर वाले ने जो कंपनी रोसनेफ्ट ने ले ली है, रशियन कंपनी ने, वो अपना मार्केटिंग करा है. रिलायंस बहुत बड़ा 50-50 पीपी के साथ में ज्वाइन किया है. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा स्कोप है. इवन ईवी आएगा तो भी ईवी कोई 10 साल 20 साल तक कन्वेंशनल फ्यूल को खत्म नहीं करेगा. 20 साल तक पक्का चलेगा, तो उसके अंदर काफी अच्छा फ्यूचर है. अब रहा सवाल की चीज का, देखिए सर, जब इस सरकार ने 5 स्टेट बैंक की एसोसिएट कंपनियों को स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ट्रेवनकोर, जयपुर एंड मैसूर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आई थिंक इस सरकार के पास पावर है या इस सरकार के पास उतना क्या बोलते हैं ना, वो है कि डिटर्मिनेशन को वो ये सब टैकल कर लेगी. अगर पहले की सरकारों ने क्यों नहीं टैकल किया? उनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट, हमको करना ही नहीं था. तो बोले क्या करे साहब, हमको यूनियन तकलीफ दे रहे. यूनियन को आप भैया, अभी आप देखो हर पीएसयू डिस्बर्समेंट में, चाहे वो फिर बीपीसीएल हो, फिर चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, वहां पे सरकार क्या करिए, एम्प्लॉइज को शेयर दे रही है. आप शेयर बीपीसीएल की शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखिए. मैं मेरी साइट पे www.sptulsian.com पे हमने रेकमेंड किया था, ये हिंदुस्तान कॉपर 30 रुपए में 150 का भाव है. हमने रेकमेंड किया था सीजी पावर 20 रुपए का, आज भाव है 200 का. इसमें कुछ मेंबर बैठे भी होंगे जो कि मेरे मेंबर होंगे. तो मैं यहाँ पे मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. मेरा कहने का मतलब ये कि अगर विल है तो देयर इज वे, और ये सरकार के पास विल है. और बीपीसीएल का पक्का मेरे को उम्मीद है कि 2022 में आपको बीपीसीएल का डाइवर्समेंट होते हुए दिखेगा और रेसिडुअल स्टेक सेल का होते हुए दिखेगा हिंदुस्तान जिंक का. आप देखिएगा सरकार 80,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लेगी 65 के सामने 23 में. तो ये तो सवाल अपना अपना व्यू का है कि आप अगर आपको एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखनी है, आई सी अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी एंड पीपल सी एडवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटी. और मैं आधे क्लास को पूरा देखता हूँ या पूरे क्लास, लोग बाग आधे क्लास को भी आधा देखते हैं कि आधा खाली है, मैं देखता हूँ आधा भरा हुआ है. और मैं तो आधा घर भरा हुआ भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ पूरा ही, बिकॉज आधे में हवा भरी हुई है. तो दिस अ मैटर ऑफ टेकिंग अ कॉल. बिकॉज अगर आप कोई भी आज आप इतिहास देख लीजिए, अगर स्टॉक मार्केट में आपको रहना है तो यू हैव टू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट, यू हैव टू हैव बी बुलिश. आज जितने भी चैनलों पे एंकर्स आए हैं, मुझे उनके नाम नहीं लेने, they've all been economists, इसलिए they all got vanished. The moment they left the channel, nobody knows about their names and all sort of things. So अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो you need to have some philosophy, you need to be having some analytical ability, तभी आप इसमें सर्वाइव कर सकोगे. तो आई एम क्वाइट होपफुल. मुझे सब ये बकवास दिखता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बीपीसीएल में उसमें प्राइसिंग पावर नहीं है. कोई आप कहाँ अड़चन है? यूपी में इलेक्शन है, कोई प्राइस पे होल्ड थोड़ी हुआ है पेट्रोल पे. I am quite hopeful, positive. बीपीसीएल का प्राइस टारगेट क्या है? प्लीज राजेंद्र अग्रवाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. राजेंद्र जी. Yes, Ashok ji, I am there. Our Rotary District Governor. Yes sir, please ask your question. Thank you, Ashok ji. तुलसियान जी नमस्ते. नमस्ते. तुलसियान जी, इंडिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो एक फार्मर इंडस्ट्री है. इतनी जमीन है, खाना पीना, ये इसको बूस्ट करने के लिए फॉर मोर प्रोडक्शन, लेस वेस्टेज, गवर्नमेंट का कुछ बूस्ट है जी ये बजट में? इसमें किसका आपने? एग्रीकल्चर, फार्मर्स अपना.
द फार्मर का जो प्रोडक्शन होता है, राजेंद्र जी, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप देखें इस बजट को, अगर आप पढ़े, में 5 मिनट क्योंकि इतना टाइम नहीं है फूड प्रोसेसिंग पे, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे, लॉजिस्टिक पे, ड्रोन का सर्वे का, लैंड रिकॉर्ड का, आपको उसकी किसमें आप क्या चीज उगाई है, वो सारा का सारा सरकार का फोकस रहा है पिछले 5 साल से। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का। पहले कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के खाली 3-4 टाइप के हुआ करते थे, जो इस इंडस्ट्री से सेवंथ कॉम्प्लेक्स में होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड फॉस्फेट, जो 3 चीज का, तो उसमें 20-20-40-40-40-20 बना देते थे। ये सरकार ने पिछले 4 साल में 18 टाइप के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर शुरू किया। आज जहां तक मेरी जानकारी, करीबन 40 टाइप के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अवेलेबल। मतलब आपको अगर नाइट्रोजन 20% डालना, नाइट्रोजन से एक तरह से ओबेसिटी होती है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपने नाइट्रोजन डाल दिया, तो सरकार वो मतलब फसल मोटी हो जाएगी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप बजट को मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे बजट को पढ़िए आप, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र किया है, ड्रोन सर्वे का जिक्र किया गया है, उसमें सारी की सारी, मैंने अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिया लैंड का, जो एक कनाल का जो कनेक्ट करने का 45,000 करोड़ का, 5 नदियों का इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी पड़ी है, बिकॉज पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आप इंटरलिंकिंग है। तो मैं कहता हूँ सरकार को इतना दुख है किसानों के लिए, बेचारों के लिए, कि इसके लिए कुछ करे, उसके लिए इनका दे मीन इट, लेट मी टेल यू, दे मीन इट। इनफैक्ट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट that we have such a bad and useless opposition. Let me be very blunt. And इतना चीज है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि जिस हिसाब से इन्होंने फोकस किया है कि इसका जो ये 44,605 के केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एट कॉस्ट ऑफ 44,605 करोड़, which will help to benefit 9.08 लाख हेक्टेयर, मतलब 1 एकड़ में 2.5 एकड़ होता है, तो 9 लाख एकड़, 9 लाख हेक्टेयर, तो 9 लाख हेक्टेयर का मतलब 23 लाख एकड़ जमीन, 162 लाख आदमियों को वाटर सप्लाई, 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट का सोलर पावर होगा। तो ग्रीन एनर्जी पे, सब चीज पे, मतलब ग्रीन एनर्जी पे तो इतना इन्होंने वो किया है कि पूछे मत, वाटर के रिसाइकिल करके पूरा। तो आई थिंक दे आर बेंट ऑन गवर्नमेंट, इज बेंट ऑन बेनिफिटिंग फार्मर, एंड वी शुड रीड ऑल दिस थिंग। एंड मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बजट का सिर्फ स्पीच पढ़िए, बहुत छोटा स्पीच है, शायद प्रोबेबली दिस the shortest speech which has been seen in the history of the budget, because Nirmala Sitharaman had the record of giving the longest budget speech in 2020 of 160 minutes, and I think today maybe she may be having the record of giving the shortest speech of 92 minutes today, you know. So 160 का भी रिकॉर्ड उनका है, 90 का रिकॉर्ड उनका है। तो आप पढ़िएगा, आप लोग सब लोग, आपको पता चला कितना फार्मर के लिए इसमें किया है लोकेशन। Thank you very much. Thank you. With this, we are run out of the time. So thank you very much, Tulsian ji, for having spared your valuable time, you know, leaving your own business members and everything. Thanks. It is always a pleasure to have you with us. Thank you, sir. With this, I would bring in Vimal Punamiya ji in the limelight, in the spotlight. Before Vimal ji starts, I would like to give a very brief introduction of. He is also a man. Vimal ji, yes. Vimal Punamiya is a chartered accountant and running Vimal Punamiya and Company as a leading chartered accountancy firm, rendering comprehensive professional services which include audit, management, consultancy, tax consultancy, accounting services, manpower management, secretarial services. He is actually much better known for servicing the whole of the cooperative sector, you know, cooperative societies and property matters. Vimal Punamiya and Company is professionally managed firm. The team consists of the distinguished chartered accountants, corporate financial advisors, tax consultants. The firm represents a combination of specialized skills which are geared to offer sound financial advice and personalized proactive services. Those associated with the firm have regular interaction with the industry and other professionals, which enables the firm to keep pace with the contemporary developments and to meet the needs of the clients. Let me add further, Vimal Punamiya ji is a very successful chartered accountant even in income tax, and appearing for all the appeal matters and everything. I have seen him personally, and I have known to him from almost 1986, you know, when he was with, I think, DM Harish and Company. So with this, we welcome you, Vimal ji, and thank you very much for having come. And you may kindly start your presentation, please. And before Vimal ji starts, please unmute yourself. I would like to once again express my sincere thanks to Choice International, who are our sponsors for this event, Rotary Club of Bombay North, and all the members of Rotary Club of Bombay North who have joined. They are also our, in fact, co-host or whatever you call it in the virtual area. IVF is, of course, the main platform which has brought to you this program. And BSc, as Ashish Bhai said, that BSc has been associated with us for many number of years. So we are thankful to all of them. Yes, Vimal ji, you can start your presentation. Yes, sir. Now, Yes, please. sir. Yes, sir. Thank you, Ashok Bhai.
straight away coming to the topic, I will deal with the amendment in the direct tax. Of course, as Ashok Bhai and earlier speakers, Sir Tulsian Saab, Ramdev ji, all have said that this is the shortest minimum to talk, and I think one of the best budget. We have seen COVID for last 2 years. Government was financially tight. Everyone has suffered, but even then, no increase in taxes. So that give me a big relief. No tax have increased in any way. On the contrary, some benefit has been given somewhere. Prospective also, retrospective everywhere. So as far as rate of tax is concerned, no change. Reduction of surcharge in a I will go that sequence wise only, so it will be easier to understand. In total, I have noted nearly 40 points, but whatever we can cover, we'll do that. Wherever discussion is required, we'll discuss. Otherwise, we'll just tell you the point. Reduction in surcharge. Earlier, cooperative society was paying rate at the tax of individual rate. So sometimes surcharge used to go up to 37%, and tax used to be up to 43%. But now, a company were paying tax only 25%, beyond a particular turnover 30%, and those companies who don't want to claim deduction of any exemption, etc., then 22%, and all startup were even on 15%. So give incentive to that. Cooperative society also surcharge have reduced now from earlier 12% to 7%. But that is as far as cooperative society is concerned. Increase in time limit of filing an updated tax return. Very interesting amendment have come. Normally, after we file the return, when assessment is over, or selection of date of scrutiny is over, or filing revised date is also over. So nowadays you get to file revised date only 9 months from end of the financial year in which you file the return. So actually that date is also over. So now what has happened? Within a period of 2, if in case you have some doubt that you have not filed return properly, or your cases, some information is received from somewhere, your department have all the information, then you can file the revised return. So it is one sort of amnesty type of scheme, your voluntary list only we can say, or we can say Vivad se Vishwas scheme, that you have to pay simple tax, interest. If you file within 12 months, we have to pay 25% extra penalty of the tax and interest, whatever comes. And in case you file after 12 months, but before 24 months, from the end of the financial year in which you have filed the return, then you pay 50%. Normally, in such cases, whenever raid take place or survey take place, then what happen? Or even ITO make the addition under section 68 or 69 with unaccounted credit or unaccounted expenditure, then he charged tax at the rate of 60%. Penalty on interest on that is another, sorry, surcharge on that is another 25% or 60%, so 75%. 4% is another that education cess, so 78%. And if you don't file voluntarily and pay that, they charge the penalty, even minimum penalty is 30%. So it goes to 108%. If you don't declare in Jabardasti, if ITO make addition and you fight for the penalty, then it go up to 138%. So here at least by paying certain extra amount, you can have a peace of mind. So one can file the revised return whenever he like. But in case raid cases, survey cases, prosecution has been lodged already, such cases you cannot file this return. Otherwise, it is one of, I personally feel it is one of the very good benefit has been given. Only thing that kept the penalty at 25 and 50%, they would have kept little lower. So it was an incentive to the SSC to file voluntarily, everything keep it clean. Then friend, next point, provision for filing repetitive appeal. Now today what happened? If you have seen bogus purchase cases, penny stock cases, bogus share premium cases, all cases, one person has taken bogus purchase practically every year. Now SSC says it is a genuine purchase. I paid by check. I sold the goods, made profit, paid tax. Where is a bogus? But other party is not paid the sale tax. So department treat that as a bogus purchases. And now there what happened? Even purchases 2 lakh rupee, 5 lakh rupee, 10 lakh rupee, they file appeal even against the tribunal's order to the High Court. Now what concession has been given? For example, one appeal is already pending on that point before the tribunal or before High Court. In my own case, then department will not file further appeal against the commissioner's order. If I lose the first appeal, then they will keep reserve the right. They will take letter from the SSC and they will take the right that they can file appeal later on. So what will happen today if appeal is filed in the High Court against the tribunal's order? I have to pay 1 lakh rupee minimum to the advocate.
and matter goes on for the 5 years for the purpose of admission. Then it takes 20 years to the disposal of the case. So my whole life will be finished only to attend one appeal only, when amount involved maybe sometime 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh. In last 1 month, my office has received more than 40 cases of the High Court, where majority of cases, only 6 cases were more than 1 crore, 34 cases were less than 1 crore. When there is a CBDT circular, if demand is less than 50 lakh, department should not file appeal in the tribunal. Up to 1 crore, they should not file appeal in the High Court. Up to 2 crore, they should not file appeal in the Supreme Court. And that is only 50 lakh, 1 crore, 2 crore is a tax only. So I think this will give a, but in case of a penny stock, in case of a bogus purchases, in case of an information received from the other department, like custom, DRI, GST, department can file appeal even against that 2 lakh rupee or 5 lakh rupee. They don't have to wait for 1 crore in High Court, 50 lakh in tribunal, 2 crore in Supreme Court. So now because of this amendment, what will happen? Department will not file appeal. Further concession has been given. For example, my case comes, I succeed before CIT appeal. And let us assume Ashok Bhai Ajmera, some appeal is pending before tribunal on that point, or pending in High Court or Supreme Court. Then also I can take benefit, can not file my appeal, or department can take a chance, they will also not file appeal till Ashok Bhai's case is decided. If Ashok Bhai's case is decided in favor, then my work is over without paying any expenses. If his case is decided against him, then of course my case will be, I can file appeal and it will be heard on the merit later on. So I personally feel a big relief has been given to the SSC as far as litigation is concerned. Number of cases will be less now before tribunal. Of course, otherwise also they are less. 10 years back or maybe 15 years back, I seen 70,000 appeal is pending before Bombay tribunal only. And today pendency is only 13,000. So things have been improved a lot, but it will be further improved. Then of course, High Court today also, when department file appeal or when we file appeal, it take 5 years for the admission of the appeal, whether appeal will be admitted or not. And assuming that is admitted, hearing will take after 20 years. So appeal filed in 2001, hearing is going on now in 2021 and 22. So this will give a big relief. Indian Bank na receipt kaise? Indian Bank no. Then friends, next item, assessing officer to pass a order giving a care to the, actually what happened last time when 1st February 2021, विमल जी आप अनम्यूट कीजिए विमल जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए। यस सर, वो आपके इधर से हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं, अभी ठीक है सर। नहीं विमल जी, थोड़ा बैकग्राउंड वाइज आ रही थी, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया था। अभी भी ऐसा हो तो आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं और वापस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। We lost you for about 70-80 seconds. Okay sir. So now fourth amendment is assessing officer can pass the order after dispute resolution scheme. Now what happened in last budget from 1st February 2021, settlement commission was scrapped. Nobody can go to settlement commission, which was the highest body of the income tax department. Like गंगा स्नान अपन जो बोलते हैं वो income tax का गंगा स्नान नहीं था, गंगा नदी थी। आप जाके कितना भी पाप करो उधर जाके डुबकी मार सकते थे, लेकिन वो बंद हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, छोटे एसएससी के लिए जिसकी इनकम 50 लाख से कम है और डिस्प्यूट 10 लाख के बीच में आता है, 10 लाख के नीचे है, उनके लिए उन्होंने स्कीम निकाला था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम, डिस्प्यूट कमेटी। एंड आप उधर जा सकते थे, वो लोग डिसाइड करते थे। लेकिन उनका ऑर्डर आने के बाद उसका इफेक्ट कहां पे देने का है, आईटीओ को पावर ही नहीं था। उसका ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, आईटीओ बोलता मेरे को सेक्शन में पावर ही नहीं है, तो कुछ होता ही नहीं था। अभी आईटीओ को पावर दिया है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का कोई भी ऑर्डर होगा तो इफेक्ट देना पड़ेगा। तो एक हिसाब से प्रोसीजर पार्ट का हो गया। देन इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 115 BBH टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल एसेट। नाउ ये क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी करेंसी आ गई है, अशोक भाई एक्सपर्ट है, मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं है। पर अभी अमेंडमेंट ऐसा आया है कि पहले कहते थे इलीगल है, कोई बोलता था लीगल है। मेरे भी कितने भी क्लाइंट है जिसका 80% पैसा इसी में इन्वेस्ट हुआ है और वो तो बोलता है बहुत मार्केट अच्छा है, कोई क्या बोलता है। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने इसको रेगुलाइज कर दिया लकीली विद अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में, तो उसको 30% टैक्स लग जाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपका कॉस्ट होगा वो बाद मिल जाएगा। समझो मैंने 1 लाख में खरीदा, 5 लाख में बेचा, 4 लाख में मुझे 30% बढ़ना है।
अगर मेरा कोई साल का लॉस है तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकूंगा। अगर मैं मेरे बच्चों को गिफ्ट दे देता हूँ, समझो मेरे पास में 10 करोड़ का अमाउंट है, मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मैं 5 करोड़ बेटे को गिफ्ट दे देता हूँ, तो पहले तो ये इलीगली था, अभी मैं लीगल दूंगा तो मेरे बेटे को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। जिसको गिफ्ट मिलेगा वो टैक्स भरेगा। जो आज भी अपन 50 लाख नॉर्मली वाइफ को, बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को देते हो तो एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा जैसा अभी मेरे को अपरेंटली सेक्शन से लग रहा है, और उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अभी उसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बाद में मालूम पड़ेगा कि वो एग्जम्पशन वाला सेक्शन तो नहीं विड्रॉ किया किधर, तो उसमें क्या एग्जैक्ट। लेकिन आज की डेट में अपन अज्यूम करते हैं कि क्रिप्टो कमीशन करेंसी में किसको गिफ्ट दूंगा तो मुझे आएगा। इसके अलावा मैं जब भी बेचूंगा, समझो मैंने एक क्रिप्टो करेंसी का 1 करोड़ रुपए का से माल अशोक भाई को बेचा, तो 1% टीडीएस अशोक भाई जब पेमेंट करेंगे मेरे को तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस भी लगा दिया, इसके अंदर गिफ्ट टैक्स भी लगा दिया, मतलब इनकम टैक्स के फॉर्म के अंदर कैपिटल गेन टैक्स भी आ गया, एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होगा, कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा तो भी नहीं मिलेगा। तो इसमें काफी इसको एक रेगुलराइज कर दिया इनडायरेक्टली। देन इंसर्शन ऑफ सेक्शन 239A, इसमें क्या किया इन्होंने कि अंडर सरचार्ज ऑफ सर्टन एओपी टू बी कैप्ड एट 15%, जो मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसी टाइप का कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसको अभी आज क्या होता है, समझो बहुत बार अपन ट्रस्ट बनाते हैं, फैमिली ट्रस्ट बना दिया, फैमिली ट्रस्ट मैंने मेरी लाइफ टाइम विल में बनाते हैं जब तो इंडिविजुअल टैक्स है, पर मैंने मेरी लाइफ टाइम के अंदर फैमिली ट्रस्ट बना दिया बच्चों के लिए, और उसमें यह बोला कि किसी बच्चे का फिक्स नहीं है, जिस बच्चे का जरूरत होगी उसको वहां से पैसा मिलेगा, मेडिकल, एजुकेशन, ये वो। तो ऐसा ट्रस्ट एक्चुअली एओपी के जैसे असेस होता है, और एओपी के अंदर इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्स लगती है। तो समटाइम क्या होता है, ज्यादा इनकम होने पे टैक्स 43% तक भी जा सकता है, क्योंकि सरचार्ज 37% है, टैक्स तो 30% है लेकिन उसमें 37% सरचार्ज है, तो वो 13% हो जाता है। फिर सुपर एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन सेस आती है, तो उसको अभी इन्होंने क्या किया है, 15% से ज्यादा आपका सरचार्ज नहीं लगे। तो मैक्सिमम रेट 30% प्लस सरचार्ज का गिन लो आप तो 34.5%, उसके ऊपर 1.5% आप एजुकेशन सेस गिनो तो 36% मैक्सिमम हो गया टैक्स इंस्टेड ऑफ 43 पॉइंट समथिंग। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आज अपन प्रॉपर्टी बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, तो कुछ भी बेचते हैं तो उसके अंदर कैपिटल गेन में पहले शेयर्स, प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता था, कैपिटल गेन है 20%, फिर उसपे वापस आपको सरचार्ज ऐड होता है, गो अगेन 37% तक, तो टैक्स आपका 30% आ जाता है 5 करोड़ के ऊपर के डील का। इस तरीके को अभी उन्होंने उधर भी सरचार्ज को फ्रीज कर दिया है 15% में। तो इसके अंदर एक काफी कैपिटल गेन के अंदर जो भी कैपिटल गेन होगा, इट कैन बी ऑन एनीथिंग, शेयर्स में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, उसके ऊपर अब आपको टैक्स में एक रीजनेबल कंसेशन मिल गया है जो पहले रियली ज्यादा था। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडर, एक्चुअली क्या हुआ था, जब स्टार्टअप कंपनियां जो बनी उसको रेट ऑफ टैक्स था 15%, और वो कंपनियां वो एलो परमिटेड थी जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर हुई, तो वो खत्म हो रही थी 2023 मार्च के अंदर। तो उसको उन्होंने 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है कि 31 मार्च 2024 तक कोई भी स्टार्टअप कंपनी बनेगी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। उसको बेनिफिट क्या होता है कि नेक्स्ट 10 ईयर में से कोई भी आप 3 साल पकड़ सकते हैं, आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो एनी कंजिक्यूटिव 3 ईयर, तो जो साल मैंने पकड़ लिया उस साल में उसका नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बिगनिंग में मेरा समझो प्रॉफिट ही नहीं है, मेरा लॉस है, तो मेरा ये बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो मैं समझो 7th ईयर में मेरा अच्छा काम हो जाएगा, तो 7, 8, 9 वो साल में तो मेरा ऑप्शन है 3 साल कभी भी पकड़ सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरा कंपनी रजिस्टर होके मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस वगैरह जो भी गवर्नमेंट की प्रोसीजर है वो 2000 मार्च 24 के पहले पूरी हो जाएगा, तो 1 साल इसको बेनिफिट दे दिया गया। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप फॉर एग्जम्पशन, उस सेम उसका ही पार्ट आ गया इसके बाद में। और ये क्या के लिए किया है, एफएम ने स्पीच में भी बोला और लॉ में इधर भी लिखा है कि बिकॉज कोविड के कारण काफी बंद था, 20 मार्च 2020 से लगा के इवन टुडे भी कोविड तो चालू ही है, तो उसके अंदर जो स्पीड से काम चलना चाहिए था नहीं चला, तो उन्होंने बोला इसको फर्दर एक्सटेंशन कर दो 2 साल के लिए। तो अभी मार्च 24 तक, 23 वाला 24 कर दिया, 22 वाला 23 कर दिया। रेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको बता ही दिया कि पहले मैट लगता था, आपको मालूम है मैट ओरिजिनल आया था रिलायंस के लिए 2005 में या 3 में आया था, 5% ओरिजिनल 2.5% था, फिर 5 किया, फिर 7.5 किया, 10 किया, 15 किया, बीच में तो 19.5 भी हो गया था, लास्ट बजट में इन्होंने 15.5 कर दिया था। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट अभी तक 18.5 था, तो उसको भी उन्होंने घटा के 15 कर दिया एट कंपनी के पास। तो ये बार कोई टैक्स बढ़ा नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री सब काफी जगह घटा है।
टैक्स इंसेंटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो अपना लास्ट टाइम है जो फॉरेन IVF फॉरेन कंपनियां का जो होता है फॉरेन सेंटर, वहां पे जो बेनिफिट था वो 2022 के अंदर खत्म हो रहा था, तो वो अभी 24 तक एक्सटेंड कर दिया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन वहां पे वो करेगा बिजनेस तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। देन पॉइंट नंबर 14 में आता है इंसेंटिव टू नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब एक्चुअली इस गवर्नमेंट लेवल का ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 14% नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट जमा करती है हर साल, और जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन के फॉर्म में मिलता है, कोई लमसम लेता है, कोई क्या करता है। स्टेट गवर्नमेंट का ये अमाउंट 10% था, तो उसके लिए भी अभी गवर्नमेंट ने 14% कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार हो जाएगी। तो ये अपने नॉर्मल आदमी के काम का नहीं है। और रिलीफ टू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अभी किसी का डिपेंडेंट बच्चा डिसेबल है और फादर ने ये समझ के पैसा पॉलिसी लिए कि आज मैं नहीं रहा, मेरे बच्चों को पैसा मिलेगा, तो मरने के बाद जो बच्चों को मिला वो तो टैक्स फ्री था। अभी किसी आदमी का एज 60 साल हो जाता है और उसको वन टाइम पैसा मिल जाता है या इंस्टॉलमेंट मिलती है मंथली एन्युटी के फॉर्म में, उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिसने पॉलिसी ली है फादर ने जिस बच्चे के लिए, तो फादर की एज अगर 60 के नीचे है तो लगेगा, बच्चे को मिलेगा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर फादर को ही मिलता है कि बच्चा तो डिसेबल्ड है, वो तो अपने आप को मैनेज कर नहीं सकता है, तो वो फादर को जो पैसा 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा उसको वन टाइम मिले चाहे इंस्टॉलमेंट में मिले टैक्स नहीं लगेगा, पर ये बच्चा डिसेबल्ड होना चाहिए उसके लिए। एग्जम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अकाउंट ऑफ कोविड। नाउ बहुत इसमें क्या हुआ है, कोविड के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर, जैसे मैंने देखा है बॉम्बे टाटा ग्रुप का, वोल्टास ग्रुप का, ताजमहल होटल में काफी देखा है कि एम्प्लॉय का 100% खर्चा उसी ने किया है। इवन बम ब्लास्ट के टाइम पे भी मेरा एक क्लाइंट वो टेररिस्ट अटैक में उसको करीब 70-80 गोलियां लग गई थी, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी फादर, सबकी डेथ हो गई वहां पे। वो लड़की बच गई थी 80 गोली खाने के बाद भी, उसका ट्रीटमेंट चला करीब 8-10 साल तक, और ताजमहल होटल ने करीब 20 से 22 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किया। हालांकि वो लड़की खुद पैसे वाली थी, पर इवन देन ताजमहल ने मतलब सो उनके यहाँ पे कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर इनकम टैक्स वाला, आपको मालूम है कहाँ पे भी कोई अच्छी चीज होती है तो इनकम टैक्स वाला अपना नजर लेके पहुंच जाता है। तो इनकम टैक्स वाले ने क्या किया था, कुछ केस में टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो अभी सर्कुलर तो पहले था, लेकिन अभी लॉ में डाल दिया है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कितना भी पैसा किसी भी आदमी ने दिया है, कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। रिएम्बर्समेंट का पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है, अदर देन एम्प्लॉयर ने दिया है। कोविड के टाइम पे अगर आदमी मर गया कोविड में और उसके एम्प्लॉयर ने उसको कितना भी पैसा दिया हुए, 10 करोड़ रुपया दिया है, 5 करोड़ रुपया दिया है, कोई तरह का टैक्स नहीं है। एम्प्लॉयर के अलावा भी किसी आदमी ने पैसा दिया है तो 10 करोड़ रुपए तक फ्री है, उसके बाद में 10 लाख रुपए तक फ्री है, उसे ज्यादा मिलेगा तो टैक्स लगेगा। पर एम्प्लॉयर से, मेरे यहाँ पे एक क्लाइंट है, उसके 4 एम्प्लॉय की डेथ हो गई, GM, CFO, चीफ अकाउंटेंट एंड चीफ परचेज मैनेजर, चारों सीनियर आदमी चले गए। चारों कंपनी के फ्लैट में रहते थे और वो बिल्डर ने सोचा कि भाई मेरा जो फ्लैट में जो रहते थे वो फ्लैट उसी का। जब एग्रीमेंट करने को गए तो स्टाम्प ड्यूटी वाला बोलता है वो आपका एम्प्लॉय था, स्टाम्प ड्यूटी तो भरो। फिर इनकम टैक्स में आएगा कि पैसा दिया तो फ्री है, प्रॉपर्टी दिया तो टैक्स लगने वाला है। उसको तो बेचारे को लेडीज का हस्बैंड चला गया या जब बच्चे का जिसका फादर चला गया उसको आप टैक्स और भरो 30-40% का, ये मकान तो 5-5 करोड़ से ऊपर के थे। तो फिर एम्प्लॉयर ने क्या किया, पहले उसको फ्लैट बेच दिया 5 करोड़ में, और जो वैल्यू थी मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भर दी उसकी। इसके बाद में जितना रुपया का फ्लैट था उतना उसको कंपनसेशन दे दिया चेक से, बिकॉज ऑफ डेथ, कोविड के डेथ के कारण, और वो पैसा वापस ले लिया फ्लैट के लिए और उसका फ्लैट हो गया, तो कोई टैक्स का प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसको अभी लॉ के अंदर ही पार्ट कर दिया। ITO अभी अपने साथ में मतलब फनी एक्ट नहीं कर सकेगा, जबरदस्ती ऐड नहीं कर सकेगा। और फनी एक्ट एबीसी अभी नहीं कर सकता है, कारण क्या है, पिछले 2 साल से 2020 से असेसमेंट फेसलेस हो गए। मेरे ख्याल से 10 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से अपील फेसलेस हो गई। फेसलेस होने में क्या हुआ, इतना आराम हो गया, एक तो आपको कई इनकम टैक्स में धक्का खाने की जरूरत नहीं, 2-2 घंटा ऑफिसर के बाद बैठने की जरूरत नहीं, उसको आधा घंटे में 40 बार सर बोलने की जरूरत नहीं, उसका मूड देखने की अपन को जरूरत नहीं, आपका फेस कितना अच्छा है उसको रिलेवेंट नहीं, और उसका फेस कितना अच्छा है अपन को रिलेवेंट नहीं। आप ऑफिस में आके फर्स्ट क्लास सबमिशन बनाओ, ऑनलाइन फाइल कर दो, अच्छी तरह से जजमेंट डाल दो, राइटअप अच्छा होना चाहिए और आपका असेसमेंट आ जाए। बिलीव मी, मेरे ऑफिस में 2018 में 40 से 50 स्क्रूटनी होती थी। 2019 में मोदी जी ने एक भी केस स्क्रूटनी में नहीं लिया, एक भी। बहुत सारे सीए तो दुखी हो गए, अभी करेंगे क्या, एक दिन ही आएगा। तो 2020-21 में मेरे ऑफिस में 2000 क्लाइंट होने के बाद खाली 4 केस स्क्रूटनी में। तो ये फेसलेस आने के बाद आपका एक तो रिटर्न अच्छी तरह से जाता है, अपनों को मालूम है कि ऑफिसर का जान पहचान कुछ काम आने वाला नहीं है, पेपर काम आने वाला है, तो अपना स्टाफ रिटर्न बहुत अच्छी तरह से भरता है। उसके बाद ऑफिसर को ऐड करना होता है
तो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर बना के आपको भेजना है पहले कि ये ऑर्डर मैं आपका बनाने वाला हूं, अपन ऑब्जेक्शन वापस फाइल कर सकते हैं। उसको कुछ भी डाउट है तो एक टेक्निकल कमेटी होती है 4 ऑफिसरों की, उसको अगर कुछ भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है 4 आदमियों की, और उसको अगर उसका ऑब्जेक्शन आने के बाद एक इनकम टैक्स वाला पोर्टल के थ्रू एक अदर रिव्यू कमेटी को भेजता है। जब ये 16 आदमी बोल देंगे कि एडिशन होना चाहिए, उसके बाद ही एडिशन होता है, और वैसा का वैसा प्रोसीजर अपील का है। आप सबमिशन ढंग का बनाओ। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा हुआ था, उसने एक प्लॉट खरीदा था 3 करोड़ रुपए में, जबकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 66 करोड़ रुपया थी। लेकिन फेसलेस में हमने पूरा ऑब्जेक्शन फाइल किया अच्छी तरह से, वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाला वैल्यूअर का, और हमारा एक्सेप्ट हो गया, जो फिजिकल में कभी एक्सेप्ट होने वाला नहीं था। 3 करोड़ का 66 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में, लेकिन फेसलेस में ये बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए अभी ऑफिसर ऐसा भी ज्यादा नाटक नहीं कर सकता है, फेसलेस के आने के बाद बहुत फर्क पड़ गया है। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन असेसी इन केस ऑफ फाइलिंग, मैंने वही बताया कि ये मतलब अभी जैसे पहले मैंने बताया था 12 महीने के अंदर 25% पेनल्टी, 12 महीने के बाद, तो अभी मैं वो पॉइंट ले रहा हूँ जो अपने अगेंस्ट के थोड़े बहुत अभी तक वाले फेवर के थे। देन तो उसके अंदर आपको सर्च के केस में नहीं जा सके, मैंने आपको बताया। एसएससी ऑफिसर ने ऑलरेडी आपको नोटिस भेज दिया है इन ब्लैक मनी एक्ट के अंदर या बेनामी एक्ट के अंदर, तो आप उसमें नहीं जा सकते। प्रोसीडिंग मैंने आपको बताया, प्रोसिक्यूशन चालू हुआ तो भी नहीं जा सकते, रेड में नहीं जा सकते, सर्वे में नहीं जा सकते। इसके बाद में नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अभी आईटीओ कोई भी चीज ऐड करता है, मैंने लोन लिया है, उन्होंने नहीं माना, मेरा बैंक में पैसा भरा, मैं एक्सपेंड नहीं कर सका हूं, उन्होंने नहीं माना, मैंने पेनी स्टॉक का प्रॉफिट किया है 17-18 या उसके बाद में, और डिपार्टमेंट बोलता है बोगस है, सेबी की इंक्वायरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे केस के अंदर मेरे को सीधा 60% टैक्स लगता है। लेकिन पहले लॉ क्या था कि अगर मेरा करंट ईयर का लॉस है कोई, तो वो लॉस के वो इनकम के सामने ऐड होता। समझो मेरा बिजनेस में लॉस है 5 करोड़ और मेरा पेनी स्टॉक एडिशनल आईटीओ ने कर दिया 6 करोड़ रुपए, तो मुझे 1 करोड़ रुपए टैक्स भरना पड़ता था, 60% एडजस्ट हो जाता। लेकिन अभी इन्होंने अमेंडमेंट किया कि ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होएगा। आपका जो बोगस इनकम ऐड हुआ है सेक्शन 68 में, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट या अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, उस पे आपको क्लियर कट 60% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस जो भी 78% आता है वो सब टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये काफी डेंजर है। तो इसके लिए अभी अपने को बोगस एंट्री लेना, बोगस एंट्री देना, पेनी स्टॉक, बोगस परचेज, बोगस प्रीमियम, ये 100% बंद करना ही पड़ेगा। और मोदी जी इन चीजों के बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो इसके कारण हमारे सीए के पीछे पड़ गए कि जो ऐसा काम हो रहा है जिधर भी उनको, अब हो सकता है जेन्युइन किसी का शेयर का भाव बढ़ेगा तो क्या करेगा पार्टी, लेकिन उनको लगता है कि पेनी स्टॉक है, रोकड़ा दे के भाव बढ़ा दिया है। तो वो मोदी जी हमारे सीए लोगों के मीटिंग में भी आके यही बोलते हैं कि जितना भी 2 नंबर का पैसा घूम रहा है उसमें सीए ही सब लफड़ा करता है। तो काफी हमारे सीए के सामने भी मोदी जी नाराज है। तो अभी इंडिविजुअल एसएससी को ये डे बाय डे ये कॉन्सिक्वेंसेस खराब ही होने वाले हैं कि अपने को ये बोगस ट्रांजेक्शन का बिल्कुल धंधा नहीं करने का है। इसके बाद 2-3 तरह की ऐसी पेनल्टी होती थी पहले कि जो ओरिजिनल पहले आईटीओ ऐड करता था और अपन अपील करते थे सीआईटीपीएल के पास में, तो वो टाइम अगर कोई आईटीओ ने मिस्टेक से पेनल्टी नहीं लगाई या आईटीओ ने ऐड किया 100 रुपया, सीआईटी उसको करना चाहता है 200 रुपया, तो सीआईटी को पावर था पेनल्टी भी लगाने का। फेसलेस आने के बाद वो सीआईटी को अपील का पावर रह गया, वो लगाने का पावर ही नहीं है। तो आज अभी फेसलेस के अंदर सीआईटी अपील को भी पावर दे दिया है कि अगर मिस्टेक से आईटीओ ने पेनल्टी नहीं लगाई है, इनिशिएट नहीं किया है, तो सीआईटी कर सकता है। आईटीओ ने 100 रुपए ऐड किया है, सीआईटी को उसे ज्यादा करने का, इन्वेस्टमेंट करने का है, तो भी वो कर सकता है और पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली साथ में लगा सकता है। देन उसके बाद में 272(2) में जब इनकम टैक्स वाला अपने से कुछ पेपर मांगता है तो अपने को उसको रीजनेबल टाइम में पेपर देना पड़ता है। अब मेरा खुद का केस है तो भी देना पड़ता है, दूसरे का किसी का असेसमेंट चल रहा है, समझो मैंने किसी बिल्डर को लोन दिया 5 करोड़ रुपए का या 5 लाख रुपए का और उसका असेसमेंट चल रहा है, और बिल्डर के वाला आईटीओ मेरे को समझ भेजता है कि आप अपना बैंक अकाउंट आके दिखाओ, आपकी बैलेंस शीट आके दिखाओ, कहाँ लोन बताया है, इंटरेस्ट मिला है तो किधर आपने इनकम बताया है, कंप्यूटेशन में टीडीएस किधर क्लेम किया है, और मैं उसको इग्नोर करता हूँ कि मेरा क्या है, ऐड होगा तो बिल्डर के केस में होगा, बिल्डर ने मेरे को ब्याज तो दिया नहीं है 2 साल से, तो मैं जाता ही नहीं हूँ उधर। तो मेरे पे आज की डेट में रूल ऐसा है कि आईटीओ 100 रुपया पर डे मेरे पे पेनल्टी मार सकता है, और नहीं जाने का 10,000 रुपया लगा सकता है, अभी 25,000 कर दिया उसको। लेकिन मेरा पेपर नहीं भेजने का, उसे मेरे परचेस उसको नहीं चाहिए, उसको खाली पेपर चाहिए, अब मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ 133(6) में, तो 100 रुपया पर डे पेनल्टी है। अभी उसको 100 रुपए में क्या आदमी परवाह नहीं करता है, भर देता है 100 रुपए के हिसाब से, अभी उसको 500 रुपया कर दिया है। और 500 रुपया कब तक कर दिया है, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है। समझो उसने पेपर में से मांगा 1 तारीख को, मैंने डेट भी अप्लाई नहीं किया और मैंने 3 महीने तक पेपर नहीं दिया, आईटीओ ने मार्च में ऑर्डर पास कर दिया, तो मेरे को 500 रुपया पर डे 90 दिन का लग जाएगा।
तो ये भी अभी थोड़ा सीरियस किया है इन्होंने। तो आईटीओ को जो भी नोटिस आवे अपने को कंप्लाई करने का। एक सेक्शन 179 है कंपनी के अंदर लिमिटेड कंपनी में तो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी लॉस करती है तो कंपनी का शेयर होल्डर का पैसा गया या बैंकों का गया या जिसका भी जाना उसका गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर की लायबिलिटी होती है। अगर वो गिल्टी है कुछ काम करने के लिए, आईटीओ ने रॉन्ग ऑर्डर पास किया है, उसको अपील करनी थी, उसने की नहीं, तो डायरेक्टर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो गया कि उसका जो प्रोसीजर डायरेक्टर जो करना चाहिए वो नहीं किया उसने। तो ऐसे केस में सेक्शन 179 है कि इनकम टैक्स एक्ट का कोई डिमांड है गवर्नमेंट का, तो सेक्शन 179 में इनकम टैक्स का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी है वो डायरेक्टर से वसूल हो सकती है। 179 का आईटीओ ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद दुनिया भर का प्रोसीजर है, इतना सिंपल नहीं उसका प्रॉपर्टी जाके लेके आ जाएगा। 179 का ऑर्डर पास करेगा, वो भी अपीलेबल ऑर्डर है, अपन कमिश्नर के पास 264 में अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट में रिट कर सकते हैं। और हाईकोर्ट में रिट एक बार एडमिट हो गया तो 20 साल तक कुछ होता ही नहीं है, जब तक दो कंपनी का ही पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अज्यूम करो कि वसूल हो सकता है। लेकिन जहां पे ऐसी कंपनी है कि जो मर्ज हो गई है और किसी दूसरी कंपनी में, या जो कंपनी वाइंड अप के प्रोसीजर में अपन ने डाल दिया, तो वाइंड अप होने के बाद कंपनी मर गई, मरे हुए आदमी के ऊपर आप टैक्स नहीं मार सकते, वो तो फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो कंपनी भी एक इंडिविजुअल आदमी की डेथ होती है, उसके बाद वो मरे हुए आदमी से टैक्स नहीं ले सकते। मरे हुए एक थप्पड़ मारोगे 10 मारोगे एक ही बात है। उसके लीगल एड से पैसा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आदमी कुछ छोड़ के गया हो बच्चों के लिए। अगर कोई आदमी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के नहीं गया है तो गवर्नमेंट को डुबत खाते ही डालना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा उसका। तो ऐसा अगर कंपनी मर्ज हो गई है किधर या डिसॉल्व हो गई है तो भी डायरेक्टर की लायबिलिटी रहेगी। पहले नहीं रहती थी, कंपनी मर गई तो बात खत्म हो गया, कंपनी से आप वसूल नहीं कर सकते, मरने के बाद तो मेरे से कैसे करेंगे, मैंने किसी गारंटी दी है तो पहले तो उस आदमी से वसूल कर सकते हैं, उससे करने की पोजीशन में है और उसके बाद पैसा नहीं है तो मेरे गारंटी वाले पे आएगा। तो जब कंपनी मर गई है वही वहां से आपकी लायबिलिटी नहीं खड़ी होती है। या जैसे समझो मेरा इनकम टैक्स है, मुझे अज्यूम करो कोई एक आदमी को 5 करोड़ रुपए देने का है और 5 करोड़ रुपए देने के लिए मेरे खुद के पास वो 3 साल हो गया मुझे उसे पैसा देने का, मतलब मैंने लोन दिया, समझो मुझे लेना है उससे और 3 साल हो गया और 3 साल के अंदर भी उस आदमी ने पैसा नहीं दिया तो मैं उसके ऊपर केस तो नहीं कर सकता हूँ। 3 साल के बाद टाइम बाउंड हो गया और समझो इनकम टैक्स वाला मेरे में मांग रहा है 5 करोड़ रुपया, तो वो आदमी से भी इनकम टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। जब मैं खुद ही वसूल नहीं कर सकता हूं उससे, वो टाइम बाउंड हो चुका है, तो इनकम टैक्स भी मेरी जगह पे बीच में नहीं आ सकता है। दैट वांट टू कन्वे। तो अभी 179 में उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया कि कंपनी अगर वाइंड अप भी हो गई है तो भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी रहेगी। ये मेन इशू यहाँ पे आ गई है कि अपन को बहुत केयरफुल होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बार क्या होता है, कोई अपना फ्रेंड आता है, वो बोलेगा मैंने कंपनी बनाया, अशोक भाई, विमल भाई सब मेरे डायरेक्टर बन जाओ, और अपने आंख नीचे सोचते, वो उसको कुछ नहीं, अपन सोचता है आदमी धंधे लग रहा है, अपना नाम ही यूज करेगा, अपना क्या लेने देने का। पर कल वो बैंक का लोन लेके बैठ गया, वो डिसअपीयर हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो और अपने गारंटी दे दी, अपन डायरेक्टर है और कंपनी ने लोन लिया तो अपनी भी जिम्मेदारी हो जाएगी। सो वो अभी कंपनी बंद होने के बाद भी लायबिलिटी खड़ी रहेगी। पेनल्टी फॉर पासिंग द अनरीजनेबल बेनिफिट टू अ ट्रस्टी स्पेसिफाइड। अभी क्या हुआ है, जितने भी ट्रस्ट थे सबको अभी रिन्यूअल करना है। जो ट्रस्ट हॉस्पिटल या स्कूल चला रहे हैं उसका 23 में चलता था, वहां पे तो 5 करोड़ तक का कलेक्शन का तो रिटर्न ही भरने की जरूरत नहीं थी। 5 करोड़ के ऊपर है तो 23 में 100% इनकम एग्जम्प्टेड है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल, ये सब मतलब एजुकेशन एंड मेडिकल के लिए एक्सक्लूसिव है, उसके अलावा उधर कुछ नहीं है। अदर ट्रस्ट जो है वो सेक्शन 12 में आते हैं, 11, 12, 13 के अंदर। तो वहां पे ऐसा कंडीशन है कि ट्रस्टी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते। समझो मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, मतलब मैं ट्रस्टी हूं उसके अंदर, और एक बाहर का पेशेंट आके उससे 12 रुपए ले रहे हैं ट्रीटमेंट करने का, तो मेरे से भी 12 रुपए ही लेने का। अगर 11 रुपए दे दिया तो कंसेशन दे दिया मेरे को ट्रस्टी को, और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो उधर उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि ट्रस्टी को, अभी बीच में क्या हुआ था, सब ट्रस्ट को नया नया सर्टिफिकेट लेने का है। अभी जूनियर सर्टिफिकेट बहुत सारों को मिल नहीं रहे। पहला 2007 में ऐसा रूल आया था कि जिसको एटीजी एक बार मिल चुका है वापस लेने की जरूरत नहीं, 21 तक वही 2007 का चला। ट्रस्ट एक बार रजिस्टर्ड हो गया 50 साल पहले तो फॉर लाइफ के लिए रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नहीं था। तो ये बार इन्होंने क्या किया, जितने भी ट्रस्ट थे सबको, पहले क्या होता था, एक से दोनों में रजिस्टर होता था, 12A में भी रजिस्टर करते थे, 23 में भी करते, 1023 में भी करते थे। अभी उन्होंने बोला आप डिसाइड करो किस में जाना है, एक सेक्शन में जा सकते हैं 1023 और या तो 1011। तो इधर जाएंगे तो ये प्रोविजन लगेगा, उधर गए तो वो प्रोविजन लगेगा। तो अभी आप जो वो ट्रस्टी का बेनिफिट वाला सेक्शन क्लियर कट है कि आपको ट्रस्टी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते। और अलग पहला वाला मिस्टेक आपने कभी किया तो पेनल्टी है, और अगर दूसरी बार मिस्टेक हो गया तो फिर ट्रस्ट का सर्टिफिकेट ही आपका कैंसिल हो सकता है, वहां तक भी जा सकता है। इसलिए मेरे को याद है बहुत सालों पहले जब इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर फर्स्ट टाइम आया था, तो टाटा के बॉम्बे हाउस के अंदर
स्टाफ को चाय पिलाया उसका अकाउंट अलग रखते थे, और डायरेक्टर को चाय पिलाया कंपनी में उसका रिकॉर्ड अलग रखते थे। वो किचन ही अलग अलग कर दिया उन्होंने। डायरेक्टर और गेस्ट के लिए आएगा चाय तो वो किचन से आएगा, क्योंकि मतलब वो खर्चे में नहीं मिलेगा डिडक्शन, उसका लिमिट आता था पर्टिकुलर अमाउंट तक, और स्टाफ का तो स्टाफ वेलफेयर में कितना भी खर्च करो मिलेगा। तो वही हिसाब से ट्रस्ट का भी अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड इन सेक्शन 14A। अभी आज का रूल क्या है कि अगर मेरे को डिविडेंड इनकम नहीं मिला है तो मेरा नेचुरली डिविडेंड इनकम है ही नहीं, तो मेरा कोई खर्चा भी डिसअलाउ कुछ नहीं हो सकता है। जो भी खर्चा इवन डिविडेंड कमाने के लिए भी किया है, डिविडेंड आया नहीं है, बस शेयर तो लिया ही है मैंने, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो खर्चा भी मुझे नहीं मिलता है, मिलता है आज की डेट में। अभी अमेंडमेंट ये किया है कि अगर मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो नेचुरली डिविडेंड टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, तो उससे कनेक्टेड जो भी खर्चा होगा, मैंने पैसा बोरो किया होगा या और भी मेरा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होगा या जो भी तरीके का डीमैट अकाउंट खर्चा किया होगा और कोई खर्चा किया होगा, वो भी मेरा सब डिसअलाउ हो जाएगा। पर वो कभी होगा प्रोवाइडेड मेरा डिविडेंड एग्जेम्प्टेड में आता है। अगर डिविडेंड टैक्सेबल है तो प्रॉब्लम ही नहीं। और आज की डेट में डिविडेंड तो टैक्सेबल ही है मेजोरिटी कंपनी में, पर सर्टेन जगह अभी भी कंसेशन है, वहां पे ये इफेक्ट होगा 14A का सेक्शन। या समझो सेकंड लेवल में पकड़ो, ये पार्टनरशिप शेयर, एक समझो एक कंपनी है और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप का और वो एग्जेम्प्टेड, उसको टैक्स नहीं लगता है पार्टनरशिप फर्म के शेयर को। तो या एग्रीकल्चर इनकम आती है वो एग्जेम्प्टेड है, तो उससे कनेक्टेड जो भी खर्चा है वो डिसअलाउड आपका हो जाएगा। तो मुझे समझो ये बार एग्रीकल्चर इनकम नहीं आई, पार्टनरशिप फर्म ने भी लॉस किया, वहां से शेयर भी नहीं आया, तो मैंने जो भी खर्चे किए हैं, मैंने भले इनकम आया कि नहीं आया, आज का रूल है कि इनकम आई तो डिसअलाउ होगा, अभी रूल है कि इनकम आई कि नहीं आई खर्चा डिसअलाउ ही होगा। इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 150 BBH टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल असेसमेंट, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोविजन रिलेटिंग टू सेक्शन 68, वही सेम लोन वगैरह जो ऐड होते हैं उसके बारे में ये सब कुछ, तो उसके अंदर भी सेम सेक्शन आ गया कि पेनल्टी अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। बोनस स्ट्रिपिंग है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, आप सब शेयर मार्केट वाले ज्यादा ही जानते हैं बोनस स्ट्रिपिंग डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या है। तो अभी ये एक्चुअली दूसरे इन्वेस्टमेंट को भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट इन इनकम टैक्स बॉन्ड, REIT बॉन्ड, AIF बॉन्ड, तरह के बॉन्ड जो भी है कैपिटल गेन वगैरह के, उसको भी वो डिविडेंड स्ट्रिपिंग, आपने जैसे शेयर खरीद लिया, बोनस शेयर मिलने वाला है, मैंने बोनस को बेच दिया या मैंने 4 दिन पहले वो शेयर गिफ्ट कर दिया, तो जो मेरा जो इनकम होता था मैंने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो इग्नोर हो जाता था बस डिविडेंड के स्ट्रिपिंग के चक्कर में। तो वो और 2-4 आइटमों को और लगेगा, सेक्शन ऑलरेडी है पहले से और 2-4 जगह और ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आज की डेट में क्या है, सेक्शन 43B है कि सर्टन एरिया में, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं चुकाता हूं तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है। सेल टैक्स का पेमेंट है, TDS का पेमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज मेरे है तो मुझे चुकाऊंगा, खर्चा कर दूंगा, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न भरूंगा तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी लोग क्या करते थे, पहले मेरा लोन है बैंक का 3 करोड़ रुपया, समझो मैंने 50 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट देने का है बैंक को, और मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले भी समझो कुछ डिफॉल्ट किया होगा तो मेरा 50 लाख इंटरेस्ट हो गया, अभी मेरे पास 50 लाख तो देने को है नहीं, तो नॉर्मल कोर्स में डिडक्शन तो मिलेगा नहीं। तो बैंक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा लोन का फैसिलिटी तो 5 करोड़ तक का लिमिट है, तुम मेरे को 50 लाख रुपया लोन में कन्वर्ट कर दे इसको। तो अभी अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, अगर मेरा लोन में कन्वर्ट हो गया तो मेरा 50 लाख का इनडायरेक्टली पेमेंट हो गया और मुझे डिडक्शन मिलता था। लेकिन अभी ये होगा कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है और खाली लोन में मेरा कन्वर्ट हो गया है तो भी मुझे डिडक्शन इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। मेरे को बहुत पहले याद है, एक बार मेरे क्लाइंट ने क्या किया था, उसको समझ करोगे, एक साल महीने का 25 लाख इंटरेस्ट देना होता था, एक साल में उसने बैंक ऑफ इंडिया को 3 करोड़ रुपया इंटरेस्ट दिया। अभी इंटरेस्ट कैसे दिया, हर महीने के एंड में बैंक वाला खाते में डेबिट कर देता था। तो अभी इनकम टैक्स वाला बोलता है आपने पेमेंट तो किया ही नहीं है, तो बैंक ने डेबिट किया है और अकाउंट में डेबिट किया है, ये हाउ इट इज पेमेंट। आपका लोन अकाउंट चलता है, पहले लोन आपका समझो 10 करोड़ होगा, अभी घट बढ़ के 12 करोड़ 13 करोड़ हो गया। तो हमने बोला साहब बैंक वाले ने डेबिट किया, इससे ज्यादा पेमेंट क्या हो सकता है, मैं चेक भी देता था बैंक को तो मेरा बैंक में ही डेबिट होता था। उसके बाद में हमने क्या किया, बैंक को एक लेटर दे दिया कि हर महीने हमारा इतना रुपया डेबिट करते हैं, जो बैंक का ठप्पा ले लिया, इनकम टैक्स फाइल कर दिया। ITO बोलता है लेटर का वैल्यू नहीं है, चेक किधर है, ये तो लेटर है। अरे मैं बोला साहब लेटर लिखो, आज मैं RTGS करता तो हमको फॉर्म ही भरना पड़ता है, नहीं चेक थोड़ी देना पड़ता है, पर वो टाइम RTGS अगर इतना पॉपुलर नहीं था 10 साल पहले। इसके बाद में ITO ने ऐड कर दिया, मैटर अपील में गया, कमिश्नर अपील भी नहीं समझा, बोला हमने चेक तो दिया नहीं। अरे सर चेक नहीं दिया, डेबिट तो हुआ मेरा, एंड ऑफ द डे मेरा पैसा तो गया नहीं घर से, और मैंने लोन भी चुका दिया पूरा साल के अंदर, 1 रुपया भी मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब मैंने दे दिया। वो भी कमिश्नर ने फिर ट्रिब्यूनल में मैटर गया, और ट्रिब्यूनल में अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रमोद कुमार, वो वार्ड मेंबर थे, एंड ही डिसाइडेड कि दिस इज द कंस्ट्रक्टिव पेमेंट, चेक देना जरूरी नहीं है, मेरे घर से पैसा गया, बैंक ने डेबिट कर दिया और बचा क्या। तो अभी अमेंडमेंट आ गया कि मेरा लोन बढ़ गया
और इंटरेस्ट नहीं चुकाया और इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हो गया तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वो भी काफी अभी केयरफुल रहना पड़ेगा कि लोन लेने के बाद उसको पहला बोलना पड़ेगा लोन मेरा क्रेडिट कार्ड, मैं तेरे को चेक देता हूँ, फिर वापस मेरे को डेबिट कर दे, तो एंट्री आनी चाहिए डेबिट क्रेडिट की। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस। अभी पिछले साल अमेंडमेंट आया था कि जिसको आप 50 लाख से माल ज्यादा बेचते हैं, किसी को 10 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है, अगर मैं सेलर हूँ, सामने वाला बायर है, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और मैं 50 लाख का माल पर्टिकुलर आदमी को बेच रहा हूँ और उसका टर्नओवर नहीं है, तो मुझे वहां से टीसीएस काटने का था, मतलब मेरे को उससे एक्स्ट्रा और चार्ज करने का है, 50 लाख के ऊपर 5,000 रुपए और टीसीएस लेने का है। अगर सामने वाले का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और उसका भी 50 लाख मेरे से ज्यादा मेरे से परचेज कर रहा है, तो वो टीसीएस नहीं काटेगा, वो मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा नहीं लगाने का है, वो टीडीएस काटेगा, वो मेरे को 50 लाख का पेमेंट करेगा, 5,000 काट के करेगा। तो ये अभी अमेंडमेंट में क्या हुआ, पिछले बार कुछ इंटरेस्ट के प्रोविजन ऐसे थे कि अगर आपने नहीं काटा तो इंटरेस्ट 1% था, काटा और भरा नहीं उसमें 1.5% था, इसको अमेंडमेंट करके उन्होंने सबको 1.5% कर दिया। टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आज की डेट में क्या है, मैंने समझो फ्लैट खरीदा, अशोक भाई 2-3 मिनट और लूँ चलेगा ना? हाँ विमल जी 2-3 मिनट जो ओनली इंपॉर्टेंट कर लीजिए, उसके बाद अपन थोड़े क्वेश्चन भी ले लेंगे। हाँ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, 4-5 पॉइंट है, खत्म हो जाए। मैं पेज नंबर 12 पे हूँ, मेरा 13 पेज लास्ट है वैसे भी। टीडीएस इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसा है सर कि मैंने 5 लाख का फ्लैट खरीदा आज, लेकिन 10% तो गवर्नमेंट बोलती है कि एग्रीमेंट कम करेंगे तो चलेगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 5.5 करोड़ है, तो मैं आज टीडीएस मेरा 5 लाख भी 5 करोड़ भी कटेगा, 1% के हिसाब से 5 लाख। और नॉन रेजिडेंट है तो जो भी स्लैब उसका होगा 20% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस वो जो भी, या वो इनकम टैक्स में लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट लेके आएगा तो मैं वो काटूंगा, लेकिन रेजिडेंट के लिए 1% है। अभी अमेंडमेंट क्या हो गया है कि एग्रीमेंट वैल्यू और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर उस पर लगेगा। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 5.5 करोड़ है तो मुझे टीडीएस 5.5 पे काटना है, भले मेरा एग्रीमेंट 5 करोड़ है। इसके अलावा फेसलेस असेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, आपको मालूम है चार्ट, मैंने चार्ट कमेटी अच्छी बता दी। रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट, वो भी अपना डिस्कस आ गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट करीब करीब कवर हो गया है। ऑर्डर ब्रिंगिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रिजीम कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ, मतलब अभी अमेंडमेंट ऐसे पास किए, पहले क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट रखना एक्ट में नहीं था, रूल्स में था, इनकम टैक्स रूल्स में, अभी इसको एक्ट में डाल दिया है कि इनकम टैक्स वाला कभी भी कोई भी कानून पास कर सकता है कि किस टाइप के व्यापारी को या किस टाइप के प्रोफेशनल आदमी को किस टाइप का अकाउंट रखना है, वो प्रिस्क्राइब एक्ट में कर सकेगा, ऐसा पावर आईटीओ को मिल गया। रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ऑफ नॉन जेन्युइन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अंडर ऑटोमेटेड अप्रूवल सिस्टम, अभी क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने नया रिजीम में अप्लाई किया है सबको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन आ गया है, अभी फाइनल आ जाएगा, तो पूरा एक नया सिस्टम चालू हुआ। पहले वाला सिस्टम अभी अलग हो गया है, पहले अपन जाते थे उसका धक्का खाते थे, दुनिया भर का पेपर उसको दिखाते, अभी ऑनलाइन आप अप्लाई करो, ऑनलाइन सब कुछ होता है। लोअर टीडीएस ऑनलाइन, असेसमेंट ऑनलाइन, अपील ऑनलाइन, हियरिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इससे क्या हो गया, टाइम बच गया, अपने जाने का टाइम, अपने आने का टाइम वो बच गया, ऑफिसरों का टाइम बच गया, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि करप्शन खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मोदी जी बोले मैं करप्शन साला खत्म करूंगी सर, वो पावर में आए करप्शन के चक्कर में, कांग्रेस गई करप्शन के चक्कर में, और हर आदमी बोलता है करप्शन है करप्शन है करप्शन है, लेकिन जब ये एक्चुअली मुझे याद है हमारे वीएच पाटिल बहुत सीनियर चार्टर्ड एडवोकेट थे, मेरे को 20 साल पहले बहुत सीए लोग में बहुत अच्छे चेले थे, मैं भी उनका चेला था एक, तो पाटिल साहब ने एक दिन हमको क्या बोला कि मेरे को बेईमान ऑफिसर का नाम मत बताओ, सब बेईमान तो है ही है, लेकिन मुझे एक ऑफिसर का अच्छा ईमानदार आदमी का नाम दो। एक 50 चार्टर्ड सीए बैठे थे, सबको बोला एक एक ईमानदार आदमी का नाम दो, उसको अपन फंक्शन करते बिरला मातृश्री हॉल में फैसिलिटेट करते। बिलीव मी, उसको 3 महीने में 50 में से एक भी सीए ने एक भी नाम नहीं दिया, तो उन्होंने बाद में वो भी छोड़ दिया। तो अभी एक्चुअली क्या हो गया कि करप्शन खत्म हो चुका है, तो मोदी जी ने जो निकाला है कि भी जो आदमी पैसा मांग सकता है या जो आदमी पैसा देना है वो मिले ही नहीं आपस में, तो साला किससे मांगेगा, तो वो काफी अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया। मेरे बॉस थे डीएम हरीश, वो भी मैं देखा जब तक वो प्रैक्टिस में थे हमेशा बोलते थे कि इनकम टैक्स ऑफिसर का अकाउंटेबिलिटी सेटल कर दो, मेक हिम अकाउंटेबल टू हिज वर्क, ऑटोमेटिक करप्शन खत्म हो जाएगा। पर सर भी 98 में डेथ हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज रियली मेरे को खुशी होती है बहुत अच्छी दिल से कि 3 साल से मैं देख रहा हूँ करप्शन खत्म तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलूंगा, पर 99% रिड्यूस हो गया है, आईटीओ लेवल पे, अपील लेवल पे, सीआईटी अपील लेवल पे। देन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम टैक्स में जो अपन क्या, मैंने बोला आपको टैक्स लगता है, फिर सरचार्ज लगता है, फिर 4% एजुकेशन सेस लगता है। कुछ हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ऐसा डिसाइड किया
कि एजुकेशन इनकम टैक्स और सरचार्ज तो डिडक्टेबल नहीं है अपने खर्चे में, लेकिन सेस जो बढ़ते हैं 4%, दैट अमाउंट इज डिडक्टेबल। दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट में थी, गोवा हाई कोर्ट फेवर में थी, और ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे। तो अभी अमेंडमेंट कर दिया है कि 4% अपन एजुकेशन सेस भरते हैं, आज के बाद इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा 2005 से, जब से सेस आई है वो टाइम से आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लेरिफिकेशन ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन। अब जैसे डॉक्टर को क्या होता है, फार्मा कंपनियां विजिट करती है, आप कोई भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, जब उसका टाइम खत्म होता है तो खत्म होने के टाइम पे 10-12 सेल्समैन बाहर बैठे रहते हैं। हर आदमी अंदर जाता है, मेडिकल उसके जो दवाइयां बनाते हैं उसके 5-5, 6-6, 10-10 पैकेट देता है, कोई अच्छी 2-5 हजार 10 हजार की गिफ्ट उसको देता है डॉक्टर को, और चुपचाप आ जाता है। अभी उसमें क्या होता है, कंपनी को खर्चे में बाद मिलता है पूरा, और डॉक्टर को भी टैक्स नहीं लगता है। अभी 2 अमेंडमेंट हुए एक साथ में। एक अमेंडमेंट ये हुआ कि कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसा टाइप का खर्चा जहां पे बिजनेस में प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी मैं क्लाइंट लाने के लिए किसी आदमी को कमीशन नहीं दे सकता हूँ। दोस्त ये मिलकर हम काम कर सकते हैं, वो फीस शेयर कर सकते हैं, तो कोई आदमी बोलेगा पूर्णिया तुम्हारे को मैं क्लाइंट दिलाता हूँ, मेरे को 10% कमीशन दो, मैं नहीं दे सकता हूँ, वो अलाउबल नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो ऐसा मैं कोई खर्चा करूंगा तो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में भी। दूसरा, मैं समझो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर को मैं गिफ्ट देता हूँ 20,000 रुपए का जाके, या 50,000 का, उसी डॉक्टर की शादी है, मैं उसको एक सोने की चेन देता हूँ 1 तोले की। नॉर्मली तो मेरा क्यों, मैं अगर वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं होता तो क्या मैं देने वाला था उसको 50,000? मैं इसलिए दे रहा हूँ, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, और वो खर्च तो, और वो उसको इसलिए मिल रहा है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उसको भी सेक्शन 28(4) में टैक्स लग जाएगा। मेरे को तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, और उसको गिफ्ट आइटम 20,000 से ज्यादा, डॉक्टर को कोई भी आइटम 20,000 रुपए से ज्यादा की मिल गई तो उसको भी टैक्स लगेगा। ये डबल अमेंडमेंट हुआ है। तो ये गलत जो प्रैक्टिस चल रही है, मेडिकल काउंसिल क्या बोलती है, कोई डॉक्टर को कोई गिफ्ट नहीं देने का, उतना दवाई का रेट ही कम कर दो। नहीं, अब लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं एवरी डे, हजारों सेल्समैन यही काम करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के बाद बैठे रहते हैं, डॉक्टर का जब टाइम खत्म होता है डॉक्टर लाइन से सबको बुलाता है एक एक करके, और सब दवाएं और पैसा और गिफ्ट देते जाते हैं। पैसा तो नहीं देते, गिफ्ट और मेडिसिन देते हैं। वो अभी जो देगा उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जिसको मिलेगा उसको टैक्स लग जाएगा। ऐसा बहुत बढ़िया पहला केस आया था जब हमारा, मेरे बोस थे डीएम हरीश साहब, उनके बेटे की शादी हुई थी अनिल को, और उसको अनिल को इतनी गिफ्टें मिली थी दैट आर गोइंग टू फ्यू करोड़ रुपीस in 1984 में। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि हरीश साहब इतने बड़े एडवोकेट नहीं होते थे तो कोई इतनी बड़ी गिफ्ट आती नहीं थी। हरीश साहब की खुद की शादी में क्या इतनी गिफ्ट आई थी? वो टाइम तो स्टूडेंट थे साहब, या एलएलबी की थी, तो बिकॉज ही इज द नंबर 1 एडवोकेट इन बॉम्बे, इसके लिए इनको गिफ्ट आई है, और आईटीओ ने 28(4) सेक्शन में सबका ऐड कर दिया। ऑफ तो अपील हुई आगे, and he was very powerful person, अपील में निकल गया, but that is the meaning of the gift, because of your capacity, if you are getting the gift exceeding 20,000 रुपए तो उसका आपको टैक्स लग जाएगा। मेरा ख्याल से विमल जी अभी अभी हो गया सर, हो गया खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आपका एक्चुअली बहुत ही जोरदार स्टडी होती है, और एक एक प्रोविजन के अंदर जाके आप, और इस बार तो ओनली 40 ही पॉइंट थे, मैंने तो आपको 120 पॉइंट के साथ भी देखा है। इसके साथ हम एक 2-3 मिनट के लिए 2-3 क्वेश्चन लेंगे। राकेश जी गुप्ता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद विकास नायक। Yes. हाँ नमस्कार जी, मैं राकेश गुप्ता भिवाड़ी से बोल रहा था। हाँ जी राकेश जी। आपने जो बताया था कि जो डिजिटल करेंसी के सेल पे जो प्रॉफिट है उसका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और सेम ईयर में अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो गया और दूसरे ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ था कि वो आपस में वो तो होगा सर, वो तो अलाउड होगा ना सर उसमें? अगर गॉड फ्रॉड कुछ होगा तो वो नहीं मिलेगा, और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, वो करंट ईयर का हो जाएगा। थैंक यू। अनिल जी शाह उदयपुर से हैं सर, आपने भी बीच में रेस, अच्छा हो गया आपका क्वेश्चन क्लेरिफाइड। ओके, सो फ्रेंड्स, अनिल जी नमस्कार। अनिल जी दिखे? हाँ अनिल जी है ना, इधर ही है। मेरा ननियाल उदयपुर में सर, साल में एक बार आता हूँ। He's a very powerful chartered accountant there. So friends, we had a very detailed, elaborate discussions on the entire budget provisions, right from the impact on the capital market, the impact analysis of the numbers of the budget by Shri SP Tulsian ji, and also the tax impact of the budget provisions by Shri Vimal Punamia ji. This budget, I will just summarize. The revised fiscal deficit for 21-22 is 6.90% of the GDP as against 6.80%, which was estimated last time. So not very much out of the estimates. The projected deficit for 22-23 is going to be 6.4% of the GDP.
the deficit target up to 25-26 is again going to come back to 4.50%, which is very, very promising and optimistic. What is important is that the capex target of this budget, which has gone up by 35.4%, almost about 2 lakh crore rupees, which will bring lot of growth. It's basically a growth budget, which I would interpret like. So even though there are no tinkering or no small soaps here and there, or no small changes in the tax rate here and there, even according to me, this budget is a very, very promising budget. And let me tell you one thing, Modi ji must never have expected that one single person is going to take his name almost about 18 times in his budget speech, which Vimal ji has done it. So credit to the government, the finance minister and the prime minister for bringing such a good budget according to me. And as our other speakers have said, we might see tremendous growth in the coming years, next 3, 4, 5 years. And whether it is a capital market or your business industry, whether it is service industry, you are all going to be benefited by this budget, which is absolutely a growth-oriented budget. So thank you, Vimal ji. And with this, we will have a formal vote of thanks for all our speakers by Shri Sunil ji Patodia, our Executive President of International Vaish Federation. Sunil ji, are you there? Sunil ji, Rajendra ji, can you spot him? Somebody can spot him? Sunil Patodia ji. Yes, I think he's still there. Can somebody call him fast? Yeah, Sunil ji, please unmute yourself. नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। हमारे डीसी गुप्ता जी की मुस्कुराहट इसकी सफलता को एकदम अंकित कर रही है। और क्योंकि इतने अच्छे आयोजन के बाद में हमारे जो सहयोगी है उनको एक वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी है हमारी। तो सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जी अग्रवाल भाई साहब का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया और समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं। और जो कि पिछले 15 सालों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं, तो हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जब हम फिजिकल इस प्रोग्राम को करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कन्वेंशन अगले साल शायद छोटा पड़ जाए, क्योंकि हमारे गुप्ता जी ने इसको अभी राष्ट्रीय प्रोग्राम बना दिया है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हमारे विशेषज्ञों को, जिन्होंने प्रति वर्ष की भांति इस बार भी IVF मुंबई के बजट विश्लेषण परिचर्चा को ऊर्जावान संबोधन से सफल बनाया है। श्री रामदेव जी अग्रवाल, जो हमेशा हमारा जो लॉन्ग रेंज इम्पैक्ट बजट का रहता है उससे हमको हमेशा अवगत कराते हैं, आज वापस किया। SP तुलसियान, ही हैज ए करेज टू स्पीक हिज ओन माइंड, और उन्होंने हर पहलू पर अपनी विशेष शैली से प्रकाश डाला। और विमल जी पुनिया, जो कि हमारे लिए टैक्स गुरु हैं, और जितने फ्रेंकली ये एग्जाम्पल देके हमको समझाते हैं, शायद और कोई कोशिश भी ना करे और हिम्मत भी ना करे, तो हम उनके तो विशेष रूप से आभारी है। वो बाकायदा नाम लेके एग्जाम्पल देते, मुझे तो डर लगने लग जाता है कि जो ये सुन रहे होंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पूनमिया जी। और हम अभिनंदन करते हैं परिचर्चा में उपस्थित सभी महानुभावों का, जिन्होंने प्रतिवर्ष की भांति बजट परिचर्चा को सफलतम बनाया। हमारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की मुंबई टीम के सदस्यों का भी आभार, विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष DC गुप्ता जी, हमारे राजेंद्र जी मालपानी जो हमारे महामंत्री हैं, हमारे कोषाध्यक्ष अशोक आनंद जी प्रकाश जी, जिनको शायद चेकबुक पे साइन कम करना पड़ रहा है कोरोना की वजह से, अगले साल शायद ज्यादा साइन करने पड़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे आज के दूल्हे, हम आभारी हैं हमारे आज के संयोजक श्री अशोक जी अजमेरा, डॉक्टर अशोक अजमेरा, CA अशोक अजमेरा, हम क्या क्या बोल सकते हैं उनको, कि उन्होंने पिछले 1 महीने से
जिस तत्परता से हम सबको जोड़े हुए इस प्रोग्राम को आज इस सफल मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया, और कुछ और विचार आगे आते जाएंगे, हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू कहीं न कहीं तरीके से शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, and we are also once again thankful to Rotary Club of Bombay North for having joined us in this program. BAC, Ashish ji name you have already taken, all the staff of the BAC, they have also given us the permission to use their logo also, and they became the knowledge partner of this seminar, an entire team, and a special thanks to Aditi who handled this technically so very well. She is our colleague in our Jito Professional Forum. I took her help in setting up the entire Zoom, and my own daughter-in-law Pallavi, she managed this entire bringing in your photograph and bringing you in spotlight and everything. Any other person, if I have left, I'm sorry. I apologize if I have left the name of anyone who contributed in the success of this project. But this project has been very successful. Today we had 667, the last highest number I saw of the people. Generally nowadays, after 2 years of continuous, this online webinars, people have lost interest in this kind of, we hardly get 100, 150 people. But today we saw 667 people here. And that is because of IVF banner, because of BAC's involvement, and mainly because of our speakers, Ramdevji Agrawal, SP Tulsian, and Vimal Punamiya ji, who have made their own brand name in this industry, in the capital market, business industry, service industry, and everywhere. So thank you everyone, and DC Gupta ji and my entire board of IVF Mumbai for giving me this opportunity. I think for about 7th or 8th year in succession. Thank you. I hope I have come up to your expectation. Thanks a lot.